Yes, a very good morning to all of you. Somebody please confirm if you are getting my audio and video very clear. All right, thank you. Now, as planned originally, we are getting started with chapter number 6, that is analysis of inventories. So, the first thing that is mentioned in this introductory paragraph is about various cost flow methods, mentioning specifically FIFO, that is first in first out, LIFO, that is last in first out, and the weighted average cost. You should be able to compute cost of goods sold and gross profit margin and ending inventory under each of the cost flow approach. This is what we have already learnt, correct? It is part of the prerequisite material as well as it is part of the revenue and expense recognition that we have learned under income statement analysis. Now, we typically start with the chapter which is highlighting the first module as inventory measurement. Now, important points that we should start noting down. Under IFRS, inventory is reported on the balance sheet at lower of cost or net realizable value. At lower of cost or net realizable value. Inventory in the balance sheet is to be reported at lower of cost or net realizable value under IFRS. Now, what is net realizable value? When you try to sell an inventory item, okay, when you try to sell an inventory item, you get some realization, and then there may be some expense relating to the realization. Means for making that sale happen, if you are incurring some expenditure that you should subtract. After subtracting, the net amount is the NRV or net realizable value. Look at this. It is equal to the expected sales price less the estimated selling cost and completion cost. If NRV is less than the balance sheet value of inventory, the inventory is written down to NRV. Means if the balance sheet is carrying the inventory at a higher value and NRV is lower, you should bring it down to NRV. And the loss is recognized in the income statement either as a separate line item or by increasing cost of goods sold. If the inventory or if the value of the inventory recovers later, the inventory can be written up and the gain is recognized in the income statement as a separate line item or by reducing COGS by amount of recovery. Because inventory is valued at lower of cost or NRV, inventory cannot be written up by more than it was previously written down. That is why write up of inventory, we sometimes call it as reversal of write downs.
I want you all to focus on this whole segment, including this note, and let me know if you are clear with that or not. Focus on this and let me know if you are clear with that or not. If this is clear, let us take examples. Cost of inventory is $60 NRV. So this is the first year. NRV is carrying value will be $56. The lower of cost or NRV. Okay. Resulting loss will be $4. This resulting loss of $4, how it is shown? It is either charged separately in the income statement as inventory write down or included in COGS. This is the first example. In fact, not the example that I've
बेटा please give me a confirmation. This first example, initial part, are you all done and clear with that? All right. Now in the same, Varsha is asking a doubt. What if NRV was 62, that is higher than cost? Then you would report it at 60, है ना? The inventory will be reported at lower of cost or NRV, whichever is lower. अभी तो cost was higher and NRV was lower. ठीक है? If NRV was greater, then you will report it at cost, not NRV. Abhi this was year 1. Now I talk about year 2. Carrying value was $56. NRV is $54. बताओ. Revised carrying value in balance sheet कितना आएगा बताओ. Revised carrying value in the balance sheet will be $54. That means you will not pick this one, you will instead pick this one. Same inventory, year 3. Carrying value is $54. NRV is $57. आउटकम बताओ. तो यहां पर लॉस ऑफ 2 आया. इन द प्रीवियस ईयर देयर वाज लॉस ऑफ $2. अभी ईयर 3 में क्या होगा बताओ. NRV is 57. पहले मुझे बताओ व्हाट विल बी द क्लोजिंग कैरिंग वैल्यू. कैरिंग वैल्यू कितना होगा. Many of you are wrong over here. Many of you are wrong over here. Very few are correct. Many of you are wrong over here. बहुत लोग गलत कर रहे हो.
and surprisingly Mandar, Harsh, जीत, ऑल ऑफ यू आर रॉन्ग, सब लोग गलत हो। थर्ड ईयर में कैरिंग, बेटा हमको एनआरवी को कंपेयर किससे करना है? कैरिंग वैल्यू से थोड़ी कंपेयर करना है। अभी थियरी में क्या सीखा? थियरी में क्या सीखा बताओ? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, कंपेयर किसको करना है? कॉस्ट एंड एनआरवी। इन्वेंट्री कैरिंग वैल्यू इज हाउ मच? कैरिंग वैल्यू इज 54। ये कोई काम का ही नहीं ना, दिस इज यूजलेस नाउ। you'll carry the inventory at its NRV because NRV is lower than cost. हमको कंपेयर कॉस्ट एंड एनआरवी को करना है। डोंट फॉरगेट दैट, डोंट फॉरगेट दैट। कैरिंग वैल्यू विल बी $57 and there'll be a gain of $3. This is basically reversal of earlier write down, which can also be called as inventory write up. Scan the whole example from the beginning till end. Scan the whole example from the beginning till end and finally tell me ये समझ में आया कि नहीं। Varsha, we are comparing 57 with cost. Cost was 60. तुमको दिख नहीं रहा है वर्षा? कॉस्ट इज 60। स्टार्टिंग में ईयर 1 में देखो, ईयर 1 में कॉस्ट कितना था? आपने इन्वेंट्री को खरीदा कितने में? यू हैव परचेस्ड इन्वेंट्री एट कॉस्ट ऑफ 60 एंड थर्ड ईयर दैट सेम इन्वेंट्री हैज एनआरवी ऑफ $57. So cost or NRV, whichever is lower. Cost or NRV, whichever is lower. Cost के साथ compare करना है, not with the carrying value. Therefore, if the inventory NRV, एक और एग्जाम्पल इसी को कंटिन्यू करते हैं। सपोज इन year 4 brought forward carrying value is $57 and now NRV becomes $62. अब बताओ कैरिंग वैल्यू इन बैलेंस शीट कितना होगा? कैरिंग वैल्यू इन बैलेंस शीट कितना होगा? Tanvi Soni, you are going wrong. Tanvi Soni, you are going wrong. All others are correct.
इट विल बी $60। तब 57 भी नहीं लेना है, सुनो, तब 57 भी नहीं लेना है, 62 भी नहीं लेना है, क्योंकि इन्वेंट्री विल बी carrying value in balance sheet lower of cost और NRV। कॉस्ट था कितना, $60 और NRV था कितना, $62। you'll carry this at 60 not at 62। तो ना 62 पे कैरी करना है, ना आपको उसको 57 पे कैरी करना है। I want you all to have crystal clarity with this concept। अच्छे से समझ लो। In case there is a doubt, ask me again। अरे निखिल गुप्ता, तुमको इतना समझ में आना है कि भाई पुराना वैल्यू कितना था 57 एंड नाउ इट हैज बिकम 60। 57 से 60 हो गया, तो बैलेंस शीट में इन्वेंट्री विल बी एट 60 और इनकम स्टेटमेंट में there will be write up gain, that is $3। Evaluate this entire example once again and let me know if you are very clear with that। And I believe आप लोग मेरे साथ साथ लिख रहे हो ना। देखो बेटा, I will just cost of inventory in NRV year 1, year 2, year 3, year 4। year 1 में NRV was $56, year 2 NRV was $54, year 3 NRV it was $57, year 4 NRV was $62।
दिस इज द एग्जाम्पल, यही एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखो बैलेंस शीट एंड पी एंड एल इन ईयर वन बैलेंस शीट। इन्वेंट्री कितना था बताओ? इन ईयर वन एनआरवी वॉज 56, तो इन्वेंट्री वॉज 60। आपने क्या किया 60 को कम करके यू ब्रॉट इट डाउन टू 56। तो आपके इनकम स्टेटमेंट में राइट डाउन का लॉस आएगा, दैट इज $4। ये समझ में आया सबको? ये समझ में आया? अभी ईयर टू में आओ। ईयर टू बैलेंस शीट, इन्वेंट्री कितना था? इन्वेंट्री वॉज 56, है ना? अभी क्या हुआ है? इन द सेकेंड ईयर एनआरवी कितना था? 54। सो यू विल reduce this to 54 एंड 56 को हटाकर हमने 54 किया, तो इनकम स्टेटमेंट में क्या होगा? इनकम स्टेटमेंट देयर इज अगेन राइट डाउन लॉस, दैट इज $2। ईयर थ्री बैलेंस शीट पर आओ। ईयर थ्री बैलेंस शीट पर आओ। इन्वेंट्री वॉज 54, ठीक है, बट ईयर थ्री में एनआरवी कितना हो गया? देखो ईयर थ्री में एनआरवी कितना हो गया? 57। बट हमको 57 को कंपेयर किससे करना है? 57 को कंपेयर करना है 60 से। 57 को कंपेयर करना है किससे? 60 से। 57 has to be compared with 60, so whichever is lower. So inventory was 54, but you will not show it at 54. आप इसको बढ़ाकर कर दोगे 57, तो इनकम स्टेटमेंट में क्या होगा? इन द इनकम स्टेटमेंट देयर बी राइट अप गेन, दैट विल बी $3। फिर ईयर फोर में आओ। ईयर फोर बैलेंस शीट, इन्वेंट्री वॉज हाउ मच? इन्वेंट्री वॉज 57, बट एनआरवी वॉज 62। आप 62 को कंपेयर करोगे किससे? आप 62 को कंपेयर करोगे किससे? आप 62 को कंपेयर करोगे किससे? सिक्सटी से, करेक्ट। कॉस्ट से कंपेयर करना है, तो यू विल अगेन इंक्रीज 57 नहीं रखना है, 57 से बढ़ाकर यू अगेन कीप इट 60। तो इनकम स्टेटमेंट में वापस राइट अप होगा। इनकम स्टेटमेंट देयर बी राइट अप गेन ऑफ $3। ये आपके सामने पूरा सिनेरियो, द होल सिनेरियो।
एक काम करो, make sure that you have written everything and then I want you to focus on this paragraph. Focus on this paragraph. This paragraph, बेटा ये जो हमने पढ़ा ना, ये अंडर IFRS था ना. वॉट एवर वी लर्नड अभी, ये जो एग्जाम्पल किया, दैट वॉज अंडर IFRS. अभी यूएस गैप अलग है यहां पर. अंडर यूएस गैप, companies that use inventory cost methods other than LIFO or retail method report inventories at lower of cost or NRV. That means they will follow the same process. इसका मतलब FIFO, weighted average cost method, all will follow same thing as IFRS. But for companies using LIFO or retail method, inventory is reported on balance sheet at lower of cost or market. अब सुनो, I will summarize this for you. You can write along with me. मेरे साथ साथ लिख लो. Under IFRS, inventory is reported at lower of cost और NRV. ठीक है. अभी यूएस गैप में आते हैं. तो यूएस गैप में देर इज कंप्लीट कंसिस्टेंसी. आई मीन IFRS में देर इज अ कंप्लीट कंसिस्टेंसी. नो मैटर विच एवर मेथड यू फॉलो, inventory will always be reported at lower of cost or NRV. Inventory will always be reported at lower of cost or NRV. अभी अंडर यूएस गैप देखो, there will be two possibilities. Retail or LIFO method. FIFO, weighted average methods
और अदर्स, ये जो रहेगा ना सेम एज IFRS रहेगा, दैट इज लोअर ऑफ cost or NRV. But if it is retail or LIFO method, then it is lower of cost or market. This is something different. This is something different. पहला काम ये करो कि ये जैसा मैंने लिखा है, you also write down. Write it down as it is. लिख लिया? Come back to your Squeezer book and see what they have given further. ये देखो, market is usually equal to replacement cost, but it cannot be greater than NRV or less than NRV minus a normal profit margin. It cannot be greater than NRV or less than NRV minus normal profit margin. If replacement cost exceeds NRV, then market is NRV. If replacement cost is less than NRV minus a normal profit margin, then market is NRV minus normal profit margin. Hardik is asking what is retail method by the way. मतलब मुझे अफसोस हो रहा है कि आप लोग रिवीजन क्लास में बैठे हो एंड यू डोंट इवन नो द नेम ऑफ द मेथड्स. ये तो प्री रिक्विजिट में है, प्री रिक्विजिट में, नॉट इवन एट CFA लेवल 1, उससे भी पहले. हार्दिक की तरह आर देयर अदर पीपल जिसको रिटेल मेथड नहीं मालूम? ये देखो, द रिटेल मेथड इज नॉट एक्सप्लेन इन लेवल 1 करिकुलम. कंपनीज दैट रीसेल मर्केंडाइज कैन यूज दिस मेथड. यहां पर बताया है पैराग्राफ में, दिस इज गिवन इन द प्री रिक्विजिट. Anyway, focus on this example. Focus on this example. It is given up to the next part. ये एग्जाम्पल पर फोकस करो एंड लेट मी नो ये समझ में आता है क्या. बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव जस्ट लर्न्ड, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस?
All right. All right. Just give me a confirmation. What are the per unit carrying values of Zoom's inventory using lower of cost और NRV? ये एकदम क्लियर हुआ, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV. ये एकदम क्लियर हुआ, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV. कॉस्ट इज 210, NRV इज 203. अभी देखो, इफ इट इज नॉट कॉस्ट और NRV, तो कॉस्ट और NRV में तो क्लियर है. So estimated selling price is 225, estimated selling cost is 22. ठीक है. Now replacement cost is given. Replacement cost is basically applied for your cost or market. Using the lower of cost or market, market is equal to replacement cost of 197 because NRV of 203 is greater than replacement cost. And NRV minus normal profit margin is less than the replacement cost because the original cost exceeds market replacement cost. Inventory is written down to $197. and देखो बेटा, इसको समझो. मार्केट का मतलब क्या है? मार्केट का मतलब क्या है? यू हैव टू बी वेरी क्लियर. इस पर ध्यान दो. NRV माइनस नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन. तो NRV कितना है देखो. NRV इज 203 माइनस प्रॉफिट मार्जिन 12, ये आ गया 191. एंड the replacement cost is 197. Replacement cost is 197. ये बन गया range of inventory for cost or market whichever is lower. Range of inventory. Inventory cannot be lower than 191. Inventory cannot exceed 197. But balance sheet में inventory कितने का था? At cost of 210. तो we compare 210 with 197 because inventory का जो range बन गया that was 191 to 197. Inventory cannot be lower than 191. Inventory cannot exceed 197. पर आपका inventory तो 210 था ना, तो you have to reduce it. But it can be brought up to 197, nothing greater than that. Nothing greater than that. That is the interpretation of cost or market, whichever is lower. Same inventory write-ups can happen over here as well. Look at this example, the follow-up example. It says assume that in the year after inventory write down in the previous example, NRV and replacement cost both increase by $10. What is the impact of recovery under IFRS and US GAAP if lower of cost of market is used? Under IFRS, Zoom will write up the inventory to $210 per unit and recognize a gain of $7 in its income statement. कीप इन माइंड वन थिंग, इन्वेंट्री का जो कॉस्ट है उससे ज़्यादा आप नहीं ले जा सकते. इन्वेंट्री का जो कॉस्ट है उससे ज़्यादा नहीं ले जा सकते. यू कैन नॉट ब्रिंग द वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री ग्रेटर देन इट्स कॉस्ट. द राइट अप गेन इज लिमिटेड टू द ओरिजिनल राइट डाउन ऑफ $7. अंडर US GAAP, नो राइट अप इज अलाउड. दिस इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. US GAAP में राइट अप अलाउड ही नहीं है. तो ये तो आपको दिमाग में क्लियर कर लेना है
कि यूएस गैप में एक बार इन्वेंट्री आपने राइट डाउन किया तो उसको राइट अप कर ही नहीं सकते. यूएस गैप डज नॉट परमिट द इन्वेंट्री राइट अप. Per unit carrying value will remain 197. Zoom will simply recognize higher profit when inventory is sold. Confirm to me one thing. ये write up वाला example, is this clear to all of you or not? Focus on this write up example and confirm to me whether it is clear or not. I'll remove the markings so that it is readable properly. I will be giving you lots of practice questions once the concepts are clear. I'll be giving you lots of practice questions. Next thing that we need to understand, from the prerequisite readings, I want you all to focus on this entire paragraph. Focus on this entire paragraph. Set of 3 paragraphs. ये पढ़ लो पूरा. This whole thing. Nikhil Gupta, I'll give you clarification on whatever you are saying through examples, more and more examples. Yes, Varsha, you can put forward that question. And right now concentrate on these 3 paragraphs and let me know whether everything is clear or not.
first para, last line. Recall from prerequisite reading that LIFO ending inventory is based on older lower cost assuming inflation than under FIFO because cost is the basis for determining whether an impairment has occurred. LIFO firms are less likely to recognize inventory write-downs than firms using FIFO or weighted average cost. निखिल, तुम्हारा जो दूसरा डाउट है, आई एम कमिंग टू दैट. ठीक है, जो एग्जाम्पल मैं करवाऊंगा इट विल गिव यू कंप्लीट क्लैरिफिकेशन ऑन दैट. ठीक है, उस क्वेजर से बेटर एग्जाम्पल है, इट विल गिव यू मच मोर क्लैरिटी. मैं वर्षा का डाउट भी क्लियर करवा देता हूं. देखो, वर्षा, उस एग्जाम्पल में बताओ व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. वर्षा, आई एम आस्किंग यू व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री. कॉस्ट ऑफ दैट इन्वेंट्री वाज $210. एंड एनआरवी कितना था. एनआरवी वाज $203. Varsha, are you listening to me? So you reported inventory at NRV. You reported inventory at NRV. So you recognized a loss. You recognized a loss of inventory write down. Write down by $7. नेक्स्ट ईयर क्या हुआ. एनआरवी इंक्रीज्ड बाय $10. तो कॉस्ट इज सेम $210 एंड एनआरवी इंक्रीज्ड बाय $10. मतलब जो 203 था वो $213 हो गया. अभी इन दोनों को कंपेयर करोगे तो कॉस्ट इज लोअर. तो इन्वेंट्री शुड बी रिपोर्टेड एट कॉस्ट. तो पुराना वाला जो इन्वेंट्री था 203 का, यू विल अगेन ब्रिंग इट टू व्हाट 210 बिकॉज 210 इज द लोअर. तो क्या हुआ. इट इज इंडिकेटिंग अगेन. नाउ इट इज इंडिकेटिंग अगेन. तो राइट अप कितने से हुआ. Write up is by $7. Earlier it was originally 210. देखो 210 था. Sorry, 210 था. You made it 203. Next year you again made it 210. तो जितना लॉस रिकॉग्नाइज किया अभी उसका रिवर्सल हो गया. Varsha, is your doubt clear? And examples that I give you ahead will clarify other doubts as well. Because इसको practice करके clear करना पड़ेगा. And when I give you a question, I want you all to solve it correctly. I will change my device. वर्षा, गेन ऑफ 3 आएगा ही नहीं ना, गेन ऑफ 7 आएगा. गेन ऑफ 7 राइट अप 7 से हुआ.
213 पे तो इन्वेंट्री को ले जाना ही नहीं है. दिस इज नॉट टू बी कंसिडर्ड ना. एनआरवी इट इज ग्रेटर देन कॉस्ट. 210 से 203 there was a loss of 7 and from here to here there was a gain of 7. मैंने वर्षा का डाउट क्लियर करवा दिया. निखिल का डाउट क्लियर कराने के लिए अलाउ मी टू चेंज द डिवाइस. Look at this example. Cost is $50, NRV is $58. Normal profit margin is $7, replacement cost is $45. चलो लिख लो. Write up this example. Write up this example and tell me what will be your response. Write up this example and tell me what will be your response. बेटा थोड़ा स्पीड से करो. रिप्लाई मी क्विकली ऑल ऑफ यू. I am not talking about IFRS, I am talking about US GAAP. Am I audible now? Am I audible now? Okay, look at this. The upper limit is the NRV, the lower limit is NRV minus normal profit margin, that is 41. तो ये upper limit lower limit हो गया. Replacement cost is 45.
I'm asking you, is this replacement cost between the upper and lower limit? बताओ मुझे, yes or no बताओ. Is the replacement cost between upper and lower limit? Is the replacement cost between upper and lower limit? In that case, the market means the replacement cost. अब सुनो, अब ट्विस्ट को समझो. What if replacement cost goes to 40? तो इसका लिमिट तो 41 है ना, लोअर लिमिट. तो मार्केट विल नॉट बी 40, मार्केट विल बी 41. It cannot go below 41. What if replacement cost was 49? It is going beyond the upper limit. This is not permissible. The market will be 48. This example clarifies everything. I am sure, Nikhil Gupta, your doubt must be cleared from this example. बेटा मैं एग्जाम्पल का क्वेश्चन दिखा रहा हूं फिर से, इन केस यू हैवेंट नोटेड दिस बेसिक डेटा. कॉस्ट वॉज $50, NRV वॉज $48, normal profit margin was $7, and replacement cost is $45. As per US GAAP, upper and lower limit set कर लो, and replacement cost उस limit में आया, then replacement cost becomes market. Limit से नीचे चला गया तो lower limit will become the market, limit से ऊपर चला गया तो upper limit will become the market. मुझे यहाँ पर 100% क्लैरिटी चाहिए, 100% क्लैरिटी, नॉट अ पिंच ऑफ डाउट. Darshan, one question to you, Darshan. What time did you join the class? Darshan, I am asking a specific question to you. What time did you join the class? Yes, I noticed that you have joined a bit late. Darshan, do one thing. जो भी पार्ट मिस हुआ है, रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना. या let's move ahead. An example on write down and reversal. Cost is $50. Now this is the second example. The second example, cost is $40, NRV is $36, inventory value will be $36, inventory write down is $4. What will be the inventory value under IFRS and US GAAP if in the next period the NRV goes to $42? I want you all to give the answer. I want you all to give the answer. I want you all to give the answer. Come on.
let me show you one thing. So there was a inventory write down by $4. Now what happens under IFRS? In the second period, cost was 40, NRV is 42. Lower of cost or NRV is 40. So inventory value is revised from $36 to $40. This is reversal of write down. I want a confirmation from each one of you. IFRS part clear or not? IFRS part clear or not? Now look at the US GAAP part. First period, inventory was valued at cost or NRV, whichever is lower, that is $36. Now this becomes a revised cost. In the second period, cost was $36. देखो यहाँ पर cost ही revise हो गया है. ये बोलता है US GAAP, cost gets revised. ठीक है, this becomes a revised cost. तो अभी NRV कितना है? $42. Lower of cost or NRV, inventory value will be lower of that. Summary, reversal of inventory write down is not permitted under US GAAP. This example will definitely punch in that required clarity. Give me a confirmation if you are all okay with that or not. हार्दिक, एक बार तुम्हारे लिए मैं रिटेल मेथड भी समझा रहा हूं, एंड बाकी लोग भी जिसको रिटेल मेथड नहीं आता वो भी सीख लो. ठीक है, रिटेल मेथड सीख लो. बट लेट मी फर्स्ट गिव वन इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन. Exception to inventory valuation at lower of cost or NRV. Agricultural produce, mining output, natural resources, forest resources. If there is an active market, inventory is valued at NRV, even if NRV is above cost. This is a common requirement under IFRS and US GAAP. बेटा इसको लिख लो आप लोग, इसको लिख लो आप लोग. And mention to me clearly that are you done and clear with that? This is a common requirement under IFRS and US GAAP.
All right, moving forward. अभी एक काम करते हैं, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन वी विल बी डूइंग लिटिल लेटर. इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन वी विल बी डूइंग लिटिल लेटर. पहले मुझे ये समझा लेने दो. ऑल ऑफ यू राइट डाउन दिस स्मॉल एग्जाम्पल क्विकली. और जिसको रिटेल मेथड आता है सॉल्व करके दिखाओ. अभी मालूम पड़ जाएगा सच में किसको किसको आता है. सॉल्व करके दिखाओ जिसको आता है. हार्दिक ने तो ऑनेस्टली बोल दिया कि सर मुझे नहीं आता. बाकी सब बोल रहे थे सर हमको आता है हमको आता है. चलो चेक कर लेते हैं सबका. विल चेक एवरीवन्स आंसर. सॉल्व इट. अनूप, जीत, हर्ष, ऑल आर करेक्ट. अच्छा दो दो हार्दिक है. दो दो हार्दिक है. एक हार्दिक ने तो आंसर दे दिया. मंदार, ऑल आर करेक्ट. करेक्ट आंसर विल बी $6,000. दिस इज वेरी इजी, वेरी इजी. करना क्या है समझो. हैव यू टेकन नोट ऑफ द क्वेश्चन डेटा. क्वेश्चन डेटा लिख लिया ना. अभी देखो सेल्स इज $150,000. ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज 40%. तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा 90,000. अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का इक्वेशन है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. सब्सटीट्यूट ऑल द वैल्यूज. तो आपको क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा एज अ बैलेंसिंग फिगर 6,000. Moving ahead, we have to now understand impact of inventory write downs on ratios. Current ratio will decrease. Quick ratio, no change. Inventory turnover, increase. Total asset turnover, increase. Debt to equity, increase. Gross profit and net profit margins, decrease.
Return on equity and return on asset decrease. Beta, I want you all to take note of this. And important काम क्या करना है समझ लो. Important काम क्या करना है समझ लो. When we are dealing with ratios, you must remind me that we have to discuss this part. You must remind me that we have to discuss this part. Quickly note it down and then we move ahead. सयोनी क्विक रेशियो उसमें ना बेटा इन्वेंट्री आता ही नहीं है. डू यू नो व्हाट इज क्विक रेशियो? फ्रॉम एसेट्स यू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम एसेट यू सब्ट्रैक्ट द इन्वेंट्री. तो इन्वेंट्री कम हो के ज्यादा हो, हाउ डज इट मैटर? बाकी के एसेट्स तो उतने ही है ना. क्विक रेशियो में देयर विल बी ओनली
cash, debtors, and marketable securities. Only the liquid assets, only the quick assets. And that is why I told you कि अभी इस पर दिमाग मत लगाओ. When we are dealing with all the ratios, automatically you will build up the understanding. Sayoni, I promise to you, you will be convinced when we are dealing with that. अभी क्या होगा ना, मेरे को वापस मेरा राइटिंग पैड चेंज करना पड़ेगा इफ आई हैव टू एक्सप्लेन इट टू यू. इसलिए मैं बोल रहा हूँ, फर्स्ट नोट डाउन दिस. आई विल गिव यू explanation for each and every aspect of these. मुझे सिर्फ इतना बता, इसको क्लियर नहीं करना था, ये लिख के रख लिया ना अभी. हैव यू रिटन दिस? When we are dealing with ratios, we will definitely understand this. Yeah, that's good. Now let us move on to the earlier part. And write the heading effect of inflation. You purchased 3 units, you sold 2 units. These are your purchase costs. First unit, second unit, third unit. ठीक है? Because of inflation, notice करो एक बात कि every unit you are purchasing, the cost is increasing 40, 50, 60. ठीक है? So what is happening? Under FIFO and LIFO, what will be COGS and closing stock, ये आपको बताने का है. And you have to write down this example. Along with me, you will write down this example. Write down this example and fill in the blanks. बताओ मुझे कहाँ पर क्या आएगा. चेक करो आंसर्स. चेक करो आंसर्स. Cost of goods sold will be 90 and closing stock will be 60 under FIFO. Under LIFO, COGS will be 110 and closing stock will be 40. Aggregate has to be same. Check your answers on your own. गलत किया है तो ठीक कर लो. And finally tell me, is this clear or not?
Moving ahead, profit will be greater in FIFO as compared to LIFO. Assets will be greater in FIFO as compared to LIFO. Equity will be greater in FIFO as compared to LIFO. And COGS will be lower in FIFO as compared to LIFO. In case of deflation, there will be opposite effects. Deflation is opposite of inflation. ये लिखने का है, write it down. I want you all to give me a confirmation. Is this done and clear or not? Is this done and clear or not? All right. You all can take a short break. You all can take a short break. You all can take a short break, 10 minutes.
All right, are you all back from the break? Now, let us start talking about the concept of LIFO liquidation, which is the next thing in your chapter. LIFO liquidation. Now, what exactly is meant by LIFO liquidation? A LIFO liquidation. A LIFO liquidation occurs when a LIFO firm's inventory quantities decline. आपका जो इन्वेंट्री पाइलअप किया हुआ है लीफो में, अभी क्या होता है, इमेजिन करो इट्स एन इन्फ्लेशनरी सिचुएशन, inventory prices are rising, but you are following LIFO. So what is happening? Your inventory will always include the old purchased items, because last in first out, whatever you are recently purchasing is being sold out. Your inventory value is always low in LIFO. But when your inventory quantity starts declining, you end up using even the older inventories. That is LIFO liquidation. In your Squeezer book, they have given over here. Just a moment. Now, what is the impact of LIFO liquidation is explained mainly through this example, a very nice example. आप लोगों ने अपने बुक में स्क्वेजर में check and tell me, have you ever dealt with this example? It's a big example, a big solution given ahead. This whole thing. This is the example given along with the solution. Very nice example. Have you done it or not is the question. For regular batch students, I have solved this example in the class. Others tell me, have you done this example? देखो बेटा, देखो, those who have done this example, आप एक काम करो बेटा, try resolving everything in this example without looking at the example. Those who haven't done earlier, I am giving them allowance. Look at what is given over here and solve it. आप देखकर solve करो. Solution दिया हुआ है, तो you can check and tell me कौन सा point clear नहीं हो रहा है. I'll explain that. Those who have done it already with me or on their own,
should try solving this without looking at the solution. In simple words, each one of you has been given a task, an important task which you must complete, and do it now without making any delay. Do it now. This is the example I want you to handle. जिसने किया हुआ है, they will be doing once again on their own and look into whether you are able to deal with it or not. And those who haven't done, आप एग्जाम्पल सोल्यूशन देखकर करो, आई डोंट माइंड. Do not waste your time. Sincerely do it. At what point you are facing a trouble, let me know so that I can guide you. Once this is done, we will practice a few more examples and that will be end of the chapter. ये देखो, after this, the chapter comes to an end. Then it is inventory ratio analysis. Ratio part will be doing later, not now. So from the calculation aspect right now, this is the last point. And I want you to handle this sincerely.
Alright, so enough time was given to you. Now tell me, I have got response from just one student, that is Nikhil Gupta. Others, are you still involved in the solution, or you are done with it? So there are some students who are done and clear with that, they don't have doubts. Those who have doubts, I want you to give me exact specification of your doubt. I will be solving the same example much more systematically with elaborate workings. Okay. There are a couple of students who are got stuck in the LIFO part. Problem is not in the question. ये स्क्वेजर वाले जैसा solution provide करते हैं, that becomes little confusing. I'll simplify it for you, but first you tell me where exactly is the problem. So couple of students have conveyed to me that FIFO is not a problem, it is LIFO where they are getting stuck. One important thing, when I'm showing the solution, every working, I will want you to take the screenshot and keep giving me signal that you are done and clear with that. Every working, every individual tiny bit of working, you should be clear with that. Okay? So let me take up that same example and let me put it on my other device. Just give me a moment. It is the same example. It is the same example. It is the same example that I have placed over here. Look at this. Look at the solution now. First, let us deal with the quantity details. Opening inventory at year 1 was 0. You purchased 14,000. Quantity available for sale was 14,000. Quantity sold was 10,000. So closing stock quantity will be 4,000. Closing stock of year 1 becomes opening stock of year 2. You again purchased 15,000. Then available for sale was 19,000. You sold 12,000. Closing inventory was 7,000. Do you see? Inventory is getting piled up. Inventory accumulate हो रहा है, देखो. Inventory is getting accumulated. 0 became 4,000. 4,000 became 7,000. That 7,000 becomes opening inventory of year 3. So inventory is continuously building up. But what happens at the third year? You purchased 10,000, available for sale was 17,000, quantity sold was 16,000. So inventory dropped down to just 1,000 units.
This is the quantity details and the cost of purchase for each year. This is the actual purchase cost. I want you all to just confirm one thing. Take the screenshot of this working and give me a signal that up to this part you are absolutely clear or not. Up to this part, are you absolutely clear or not? Okay, you are clear up to this part. So moving ahead, FIFO basis. Beginning inventory plus purchases, cost of goods available for sale minus COGS will give you ending inventory. Beginning inventory was 0, purchases 1,120,000, cost of goods available for sale will be 1,120,000, and regarding COGS, year 1, 10,000 units at 80 per unit, COGS is 800,000. We bring that 800,000, subtract it, the ending inventory comes to 320,000, which becomes the opening inventory for the second year. Purchases made in the second year, 1,260,000, available for sale will be 1,580,000. COGS for the second year will be, mind it is FIFO method. So earlier 4,000 units and new 8,000 units will be sold. It is 992,000. So bring forward that 992,000 over here, and ending inventory comes to 588,000, which becomes the opening inventory for year 3. Purchases 880,000, cost of goods available for sale 1,468,000, ending inventory, COGS in year 3 will be 7,000 plus 9,000, in total 16,000 units with a cost of 1,380,000. Ek kaam karo, take the screenshot of this working, all of you take the screenshot of this working, COGS working ka screenshot le lo. Take the screenshot of this working COGS, and then we get back to this and place 1,380,000 over here. 88,000 is the remainder as ending inventory. Take the screenshot of this as well. Beta screenshot lete jao, because this solution is a better presented solution compared to what is given in your Squeezer book. Calculations are same, but इन लोगों ने Squeezer book में clarity के साथ working नहीं दिया है. I am giving you detailed systematic solution. Please note it down properly. And check करो ये COGS वाला working. Have you taken the screenshot of this as well? Mandar, if you don't understand from there, that is okay. But अभी जो मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ ये क्लियर होना चाहिए. This should be clear to you. ये भी क्लियर नहीं है, then there is a problem. Now, income statement, FIFO, sales quantity, sale price per unit, total sales less COGS, and you get gross profit. This is a very simple working. If you have done everything systematically, this should not create a trouble to you. This should not create a trouble to you. This was the FIFO solution.
Once FIFO solution is done, we step into LIFO. Can I have a signal from each one of you that FIFO no problem? FIFO में no problem? इतना तो बता दो that FIFO does not have any problem. All right. When we start with LIFO, ये वर्किंग तो सेम रहेगा. क्वांटिटी डिटेल्स एंड कॉस्ट ऑफ परचेज चेंज नहीं होगा. क्वांटिटी डिटेल्स एंड कॉस्ट ऑफ परचेज चेंज नहीं होगा. डू यू अग्री विथ मी? एक एक पॉइंट पर रिस्पॉन्स चाहिए मुझे. व्हेन यू स्टेप इनटू LIFO मेथड, क्वांटिटी डिटेल्स एंड कॉस्ट ऑफ परचेसेस विल नॉट चेंज. कंफर्म करो. क्वांटिटी डिटेल्स एंड कॉस्ट ऑफ परचेस विल नॉट चेंज. अग्री? ओके. अभी देखो, इन केस ऑफ LIFO, beginning inventory was 0, purchases 1,120,000, cost of goods available for sale 1,120,000. LIFO में COGS will be for that year only, that is 800,000. Bring it, subtract it, closing inventory or ending inventory is 320,000. That becomes opening inventory for the second year. Purchases for second year will be 1,260,000. Available for sale 1,580,000. Second year COGS, यहाँ ध्यान देंगे. First you will sell the new purchases and your ending inventory comes to 572,000, which becomes opening inventory for the third year. And purchases 880,000, available for sale 1,452,000. Ending inventory will be obtained by computing COGS and subtracting that. तो COGS पर ध्यान दो. 10,000 units नया वाला LIFO method है ना. First you will sell this, then you will sell the 3,000 units from the earlier purchase, and then 3,000 units from the old purchase. Your COGS is 1,372,000. Subtract it and you get 80,000 as ending inventory. Now carefully look into this whole thing और मुझे बताओ, what is something that you couldn't follow? What is something that you couldn't follow? Take your time, understand it properly and tell me what is something that you couldn't follow over here. यहां पर क्या नहीं समझा? Check the working of COGS.
देखो बेटा, most of you had a problem with LIFO ending inventory. तो LIFO ending inventory is primarily dependent on the LIFO cost of goods sold. तो LIFO cost of goods sold clear है, so the ending inventory working will also be clear. Cost of goods available for sale minus the cost of goods that you have sold. So what will remain will be the cost of goods unsold, and cost of goods which is unsold उसी को तो हम ending inventory बोल रहे हैं. Cost of goods remaining unsold will go in the balance sheet, वही तो ending inventory है. Correct? Now this part becomes very simple. ये part तो बहुत easy है. If your COGS working is understood, you can easily understand this last part. चेक करो एंड बताओ. एंड एक काम करो, once again refer to the solution given. once again उस क्वेजर वाला सोल्यूशन चेक करो. And I believe you are taking the screenshots, huh? Gross margin, FIFO, 20%, 21.27%, 21.59%. LIFO, 20%, 20%, 22.05%. And then comparative gross margin for both has been given. Comparative gross margin for both has been given. बेटा एक बात सुनो. This morning students were telling me कि सर, when we are sitting with you we don't find it difficult. The moment we are trying to solve questions on our own we are facing difficulty. खुद से करने जा रहे हैं तो डिफिकल्ट लगता है, आपके सामने डिफिकल्ट नहीं लग रहा है. डू यू रियलाइज व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इज विद द एप्लीकेशन. एप्लीकेशन वीक है. जब मैं समझा रहा हूं कि देखो ऐसा ऐसा करना है, यू अंडरस्टैंड इट, यू डू इट. कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ऑल्सो अपीयर्स टू बी सिंपल. ऑन योर ओन व्हेन यू आर वीक इन एप्लीकेशन, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है, बट अप्लाई नहीं कर पा रहे हो. देखो, FIFO gross margin is increasing constantly because of inflation. LIFO gross margin will increase only when there is liquidation. That is the concept of LIFO liquidation. Other than inventory ratios, we have completed this whole chapter. Other than inventory ratios, we have completed this whole chapter. अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा.
डोंट टेक द प्रैक्टिस लाइटली, प्रैक्टिस करना पड़ेगा सिंसियरली. एंड few examples and then we switch to MCQs. Come on, these are additional few examples. Quickly solve it. Look at the answer. We did this kind of question yesterday, right? With income statement. Next example. अभी आंसर आना चाहिए. It's a similar variety of question that you have done. You should be able to give me correct answer. Let us check the answer for this. Gross profit will be 28,500. Instead of FIFO, this time we have adopted LIFO. Keep taking the screenshot of the solution. बाद में आपको जरूरत पड़ा तो
Solve this one now. Should I show the solution? Should I show the solution? Check the answers.
These will be your final answers. Yeah, I'll show the question again. Just a moment. Yeah, this is the question. If you are not getting the FIFO part, देखो बेटा, purchase 100 units, ठीक है, हाउ मेनी यूनिट्स यू हैव सोल्ड? 310. ध्यान दो यहां पर, देखो 100 यूनिट्स यू विल सेल फर्स्ट, देन 80 यूनिट्स, ठीक है, देन आउट ऑफ दिस 100 80 80 ये कितना हो गया? 260. यू हैव सोल्ड 310, है ना? तो आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री भी तो था 60 यूनिट्स, ये 60 आप सबसे पहले सेल करोगे. You will sell this 60 first. Varsha, whatever I am saying, track that. You will sell this 60 first, then this 100, then this 80. Calculator ले लो, and check. Out of 310 units sold during the year, 60 will be this one. तो 310 minus 60 करो, बचा 250. 250 में से ये 100 minus 100, फिर ये 80 minus 80, and then 70 out of this, 70 out of this, 70 out of this. तो इसमें से 10 बचेगा ना, इसमें से 10 बचेगा. 10 into 58, 580, and 80 into 60, 4800. इसमें से 10 और इसमें से 80 बचेगा. दैट इज हाउ दीज 90 यूनिट्स विल बी कंपोज्ड ऑफ.
इसलिए देखो वर्किंग, देखो फीफो का वर्किंग देखो, 10 units from that 58 and 80 units from that 60. One minute, let me check. Yeah, it should be 340. ये 340 होना चाहिए. Let me correct it for you. This should be 340. It should be 340. It should be 340. ये details correct है. These details are correct. These details are correct. But this should be 340. तब तो 60 plus 340 will be what? 400. 400 में से 310 sold, 90 remaining. Aggregate of this also is 340. वर्षा, वर्षा फीफो का मतलब जानती हो? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. जो पहले खरीदा वो पहले बेचा. जो पहले खरीदा वो पहले बेचा. तो ओल्ड इन्वेंट्री इज सोल्ड फर्स्ट. सो द एंडिंग इन्वेंट्री में जो प्राइस रहेगा वो तो लेटेस्ट परचेसेस का रहेगा ना. इतना सा कॉमन सेंस तुम लोग को नहीं लग रहा है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. ये पुराना इन्वेंट्री जो है, ये देखो, ये पुराना इन्वेंट्री जो है दैट इज सोल्ड फर्स्ट. दिस इज सोल्ड फर्स्ट, दिस इज सोल्ड फर्स्ट, दिस इज सोल्ड फर्स्ट. तो जो बचेगा वो इसमें से बचेगा ना. वर्षा, यू शुड टेक अप दिस इन अ सिंसियर मैनर. ये नहीं चलेगा. तुम्हारा लर्निंग उल्टा पुल्टा हो गया है पूरा. आई एम नॉट ट्राइंग टू थ्रेटन यू, बट दिस इज द रियलिटी. भाई और किसी को भी कंफ्यूजन है क्या यहां पर? इफ नॉट देन वी कैन स्टार्ट विथ एमसीक्यूज. चैप्टर हो गया खत्म.
Let's begin from here. We'll be dealing with MCQs of chapter 2. We'll be dealing with MCQs of chapter 2. And give your best shot. We will be dealing with MCQs of chapter 2. This will be the first part. Start with this. Give your best try. Correct answer will be B. Correct answer will be B. I'm sure nobody has confusion with this. All have given the correct answers. Move on to the explanation part of this. You can take the screenshot wherever required. Question number 2. Question number 2. For question 2, correct answer will be obviously A. एक्सप्लेनेशन स्क्रीनशॉट्स जब जब जिसको भी चाहिए प्लीज लेते जाओ. I will not convey this every now and then. As and when required, you take the explanation screenshot. Question 3.
Question 3, correct answer will be B. Look at the explanation. By far all of you are going correct. By far all of you are going correct. Question 4. Question 4, correct answer will be B. Look at the explanation. Question 5. Any explanation, any question that you find confusing, please let me know. I will give you the required explanation with complete understanding. Question 5, correct answer will be C. Look at the explanation. C is not an indicator. So be careful with questions like this. Okay, be careful with questions like this.
when it says it is not an indicator. Question number 6. Come on. All of you are wrong over here. All of you are wrong over here. सब गलत हो. क्वेश्चन पढ़ो. A performance obligation is satisfied over time when a customer accepts delivery of goods or service at end of the contract term. End of the contract term तो 1 point हो गया ना. It cannot be considered over the period of time. It cannot be considered over the period of time. So that is incorrect. A will be incorrect. A will be incorrect. B को पढ़ो. The supplier has created an asset with no alternative use and the right to payment for the work and has the right to payment for work completed up to date. That is the correct answer. ये criteria सीखा था ना हमने. We have learned 3 criteria. That is one of the criteria. Correct answer will be B. देख लो. Correct answer will be B. Look at the explanation. If you are all clear with that, deal with this one.
Seventh correct answer will be C. Seventh correct answer will be C. Eighth. Correct answer will be A. Look at the explanation. A realtor is an agent. Agent's income. Agent's income will always be the commission income. Agent's income will always be the commission income. Nothing other than that. एट सबको क्लियर है ना? देन नाइन्थ, very very important. Ninth, ninth, give your best try in ninth. I am happy that all of you are giving correct answer. Correct answer will be B. Abhi, when I show the explanation, some people did not give answer. I am keeping a tab on everyone. I am concentrating on each one of you. ठीक है? Those who are not giving answer, मैं उन पर भी ध्यान रख रहा हूं. So many of you did not give answers. Explanation देखो. This is important. Application of revenue recognition. When revenue is to be recognized over a period of time. ये explanation आपको समझ में आना चाहिए. Take the screenshot of this explanation.
बेटा इन दिस क्वेश्चन किसी को अभी भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो। अनीस शेख तुमको समझ में आया कि नहीं एंड में? चलो क्वेश्चन 10। वी हैव डन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, गलती नहीं होनी चाहिए। Ten correct answer will be C. 10 correct answer will be C. Let me take you ahead with the next set of questions. Just a moment. Practice session number 2, starting with question number 11. Starting with question number 11.
11 correct answer will be B. Royalty fees from franchisee are recognized periodically when they become contractually payable. आपको याद होगा, we have learned this in the 5 cases of those revenue recognition, specific revenue recognition situations. 12th, correct answer will be obviously A. Remember, we have dealt with multiple cases of software license. 12th correct answer will be A. Look at this explanation. You can take the screenshot of explanation. You can take the screenshot of explanation. Thirteenth, again a question based on software license. A question based on software license.
13th correct answer will be C. Look at the explanation. Explanation is similar. Okay? Explanation is similar because it is explaining all three possibilities, all three situations. Question 14. Question 14 correct answer will be A. Same explanation what we have seen in bill and hold case. Correct? This is all about bill and hold. Nikhil Gupta, it should not be B. The correct answer will be A. Question 15. Come on, all of you. 15th. Fifteenth correct answer will be A. This was easy. इसमें difficulty नहीं होना चाहिए. This was easy. Sixteenth. Again, a question on stage of completion. Different stages of completion. Long term contract, stage by stage completion.
16th correct answer will be A. Look at the explanation. Look at the explanation. Seventeenth. Seventeenth correct answer will be C. ये सबको समझ में आना चाहिए. Look at the explanation. Why the correct answer will be C. Eighteenth, one line answer. Eighteenth correct answer is B. I don't have to give explanation for that. 18th correct answer will be B. 19th.
19th correct answer will be B. Question number 20. The correct answer will be B. Look at the explanation. #21. #21 correct answer is A. #22. Is it the same one? Correct answer will be B. Yeah. This same question got repeated, maybe. Question 23.
23 correct answer will be A. It is continuing operations. Fire may be infrequent, but it is not from discontinued operation ना. आप लोग समझो, fire may be infrequent, but it cannot be considered from infrequent, I mean from discontinued operations. भाई 23 सबको समझा ना? Is 23 clear or not clear? Twenty-fourth. Changing an accounting policy will always have a retrospective effect for all the prior periods shown in a report. For all the prior periods shown in the report. तो all prior periods मत लिख देना. All prior periods मतलब तो when onwards the entity originated, वो जरूरत नहीं है. Prior periods shown in the report. So correct answer will be C. Twenty-fifth. Twenty-five correct answer will be B. Look at the explanation. Twenty-sixth. Twenty-sixth correct answer will be A. Expense the purchase. When the asset future economic benefits are highly uncertain, company should expense that purchase. 27th.
Come on, 27th. Correct answer will be C. 27th correct answer will be C. 28th. A change in accounting estimate will always be reported prospectively. इसको ध्यान से समझो. Accounting estimate में change हुआ है ना, not in the policy. It will be reported prospectively. Correct answer will always be A. Correct answer will be A. इतना हमेशा के लिए समझ लो. A change in accounting estimate which is not representing change in accounting policy. Accounting policy में change हुआ तो you have to give retrospective effect. But if there is a change in the accounting estimate, the effect has to be given prospectively. Twenty-ninth. Quickly give me the answer. Twenty-ninth correct answer will be C. 29th correct answer will be C. Thirtieth. We'll consider this as the last question before your lunch break. The correct answer will be C. 30th correct answer will be C. You can take your lunch break.
Yes, lunch break will be for 45 minutes. Lunch break will be for 45 minutes.
All right. Let's continue with our practice session, and we have attempted 30 MCQs already. Start with number 31. Come on. Start with 31. Most of you are going wrong. You are going wrong. Correct answer will not be B, it will be C. Question number 32. What does it say? A company with no debt or convertible securities issued publicly traded common stock 3 times during the current fiscal year. Under both IFRS and US GAAP, the company's basic EPS equals diluted EPS. Capital structure is considered complex at year end. Basic EPS is calculated by a simple average of shares outstanding. Very simple question this is. Correct answer will be obviously A. Basic EPS will be equal to its diluted EPS. Look at the explanation. (33)
33. Correct answer will be C. Some of you have given A as the answer. Correct answer will be C. इसको ध्यान से समझो बेटा. Look at this explanation. Look at this explanation. $34. 34. ये सब में कैलकुलेशंस भी इन्वॉल्व हो रहा है. So be careful about this. Even if it takes some time, deal with it correctly. आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए. That should be your prior objective. Let me give you the required explanation. $5.54 आ रहा है diluted EPS. $5.54 आ रहा है diluted EPS. So if I show you the question again, the correct answer has to be B. इसमें गलती नहीं होना चाहिए. अनूप, तन्वी, हर्ष,
Uh, Nikhil Gupta, you should not go with those guesses. And Anup, avoid those silly mistakes. Avoid those silly mistakes. Moving forward, look at this explanation again. If you are clear with that, $35. This is easy, should not commit mistake. $35, correct answer will be A. Look at the explanation. Very easy question. Correct answer will be A. It is basically stock options.
Am I audible now? Am I audible now? All right. Yeah. So only thing what I mentioned was that it is important for you to realize your mistake. जिसको गलती नहीं समझ में आएगा, they should ask me. $38 correct answer. Correct answer for 38. Correct answer will be C. This time all of you went correct. Explanation देख लो. 9091 शेयर्स है. बेसिकली 9091 आर एडिशनल शेयर्स. क्वेश्चन पूछा क्या आपसे? देखो क्वेश्चन पूछा क्या है, हाउ मेनी शेयर्स शुड बी यूज्ड इन कंप्यूटिंग डाइल्यूटेड ईपीएस. तो वो 9091 तो था ही, एंड ओरिजिनली देयर वर 300,000 शेयर्स. तो 300,000 शेयर्स प्लस 9091 करके इट शुड बी 309,091 शेयर्स. खाली ये आंसर दोगे तो गलत हो जाएगा, बट आई एम हैप्पी दैट नन ऑफ यू कमिटेड दैट काइंड ऑफ मिस्टेक. Now, look at this one and give me correct answer. Give me correct answer. You have to compute the diluted EPS. It's a case of convertible bonds. Give your best try, should not commit mistake.
39. Correct answer is not C. Harsh. Harsh, check करो. Correct answer is not C. Correct answer is B. Explanation देखो बेटा. Harsh, did you realize your mistake? And the comment given by Nikhil is very clear and absolutely fine. The diluted EPS can never exceed the basic EPS, no? Moving forward to the next one. Try your best that you should not commit any mistake. For 40, the correct answer will be B. Look at the required explanation.
Please give me a moment to change my device.
All right. Guys, now please check. We have completed chapter 2 and chapter 6. We are now starting with chapter number 7. 7, 8, 9 and 3 will be the target for the coming days. And chapter number 9 is not 9, sorry, chapter number 7 is analysis of long-term assets. Analysis of long-term assets. In the whole module, what all you have to learn, your objective is to cover up module 33.1, that is intangible long-term assets or long-lived assets, and the next thing is impairment and derecognition. First about impairment and then derecognition. That's all. And then we have disclosures relating to long-term assets. Now, this topic is not that big. You have to mainly deal with intangible assets and the content with respect to impairment. We start with intangible assets. मुझे बताओ, I want your involvement. I want your involvement. All of you, please. What are intangible assets if we talk about? These are identifiable. Non-monetary assets. Without physical substance. Three important characteristics. Three important characteristics in the meaning and definition of intangible assets. I'm not asking the examples. What I'm asking is the meaning of intangible assets. Identifiable, मतलब intangible asset identifiable होना चाहिए, आपको दिखना चाहिए वहां पर कि yes, there is something separately identifiable as an intangible asset. It has to be non-monetary asset. Monetary asset जिसका fixed amount होता है, जैसे कि cash, debtors, correct?
कैश डेटर्स आर सच कॉम्पोनेंट ऑफ एसेट्स विच आर मॉनेटरी, ये नॉन मॉनेटरी होना चाहिए जिसका वैल्यू चेंज हो. इन्वेंट्री कम्स अंडर नॉन मॉनेटरी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कम्स अंडर नॉन मॉनेटरी, intangible asset comes under non monetary, but cash comes under monetary, receivables comes under monetary, है ना. investments come under non monetary क्योंकि investment का value change होता है. and then it should have no physical substance, it should have no physical substance. ये बेटा अभी कौन से लेवल में तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो निखिल? Don't use explanation like something that cannot be feel or touch. ये feel और touch वाला अभी definition से बाहर निकलो. Make it a formal language, something that does not have physical substance. किसी का physical substance नहीं है. These are the characteristics of the definition of intangible assets. ठीक है. एक काम करो, दिस होल थिंग आई वॉन्ट यू टू गिव अ क्विक रीडिंग up to this part only. Give a quick reading and tell me, are you clear with the whole matter? Give me your quick response. Are you clear with that? What is written over here? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, किसी इंटेंजिबल एसेट से मिलने वाला फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मस्ट बी प्रोबेबल. फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मस्ट बी प्रोबेबल. Let me explain again. We are dealing with intangible assets. The definition of intangible assets under IFRS, one line definition. These are identifiable non-monetary assets without any physical substance. The question is, some people are not clear with what is monetary and non-monetary asset. देखो, monetary assets are those assets which have a fixed or determinable amount. Fixed or determinable amount. Examples could be cash, रिसीवेबल्स. इनका वैल्यू फ्लक्चुएट नहीं होता, स्टेबल वैल्यू. कैश का वैल्यू थोड़ी चेंज होता है. इफ यू हैव 10,000 रुपीज लाइंग विथ यू, इट विल रिमेन 10,000 रुपीज. इट विल नॉट बिकम लेस और मोर. इफ यू इन्वेस्ट दैट मनी, इफ यू डिपॉजिट दैट मनी इन बैंक, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग. देन उसका नेचर चेंज हो गया ना, वो इन्वेस्टमेंट बन गया. बट अंटिल इट इज कैश, इट्स वैल्यू वोंट फ्लक्चुएट. बट इन्वेंट्री, इफ इन्वेंट्री आइटम इज लाइंग विथ यू, its value will fluctuate, no? If you have property, plant, equipment, if you have intangible assets, if you have any intangible asset or any investment, its value will fluctuate. जिसका value fluctuate होता है, that is called non-monetary. Are we clear with that? And जिसका value stable रहता है, we always identify that as monetary. डेटर्स एंड कैश, जिसको आप रिसीवेबल्स भी बोल सकते हो, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ मॉनेटरी एसेट्स. तो इंटेंजिबल एसेट कम अंडर नॉन मॉनेटरी
Of course, it does not have any physical substance. When it comes to identifiability, ये देखो, in your Squeezer book, intangible assets are also considered either identifiable or unidentifiable. An intangible asset which is identifiable, इसके characteristics देख लो. These are the characteristics of identifiable intangible assets, and what does not have that characteristic will be unidentifiable intangible asset, which cannot be purchased separately and may have an indefinite life. And the most common example of unidentifiable intangible asset is goodwill. What is unidentifiable? We generally call it goodwill. What is identifiable? Like patent, trademark, intellectual property, intellectual asset. All these are identifiable intangible asset. What is not identifiable and does not have a definite life will be an unidentifiable intangible asset. Best example is goodwill. I want you to give me a confirmation that is this part clear to all of you or not? Is this part clear to all of you or not? Give me a quick response. Is this part clear to all of you or not? Okay, if you are clear with that, now we have intangible assets created internally, and then we have purchased intangible assets. Two different categories of intangible assets, and then intangible assets obtained on a business combination. Three different categories of intangible assets. ये तीन कैटेगरी आप समझ लो, the task is done. Let us first talk about intangible assets created internally. Intangible assets created internally. I want you to read this and tell me, are you clear with this part or not? This mainly deals with research and development cost. I want you to deal with this and tell me,
देखो बेटा, if there is any intangible asset which is created internally create किया मतलब you must have undergone research and development. अब सुन लो, research and development are two different activities. Research is finding a solution and development means converting the outcome of the research into a marketable product. यानी किसी सोल्यूशन फाइंडिंग में आप लगे हो तो दैट इज रिसर्च. उस रिसर्च का आउटकम जो सक्सेसफुल हो जाए एंड देन यू कन्वर्ट दैट इनटू अ मार्केटेबल प्रोडक्ट. किसी रिसर्च को आपको मार्केटेबल बनाने के लिए वो जो पार्ट है दैट फेज इज कॉल्ड डेवलपमेंट फेज. तो यहां पर IFRS एंड US GAAP दे हैव डिफरेंसेस, ये आपको समझना पड़ेगा. दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. IFRS क्या बोलता है? All expense incurred during the research phase should be expensed. उसका कुछ भी कैपिटलाइजेशन नहीं होना चाहिए. And in case of development, when multiple criterias are fulfilled, when you can establish the technical or financial feasibility or economic feasibility of the intangible asset, when you are sure that you will be able to complete the intangible asset, when you can measure its cost, ये सब conditions पूरी होने पर development cost can be capitalized. This is a straight simple criteria in IFRS. US GAAP में criteria different है. तो ये part आप लोग को पढ़ने से clear होता है कि नहीं, देखो, and let me know if you are clear with that. Let us check this. Under IFRS, research costs, which are costs aimed at discovery of new scientific or technical knowledge and understanding, are expensed as incurred. Are expensed as incurred. Research costs are expensed as incurred. However, development cost may be capitalized. Development costs are incurred to translate the research finding into a plan or design of a new product or process. To recognize an intangible asset in development, a firm must show that it can complete the asset and intends to use or sell the completed asset among other criteria. To criteria, if you typically look into, there are 6 different conditions to be fulfilled. 6 different conditions to be fulfilled.
let us read about US GAAP. Under US GAAP, both research and development costs are generally expensed. Very, very important point. Very, very important point. Under US GAAP, both research and development costs are generally expensed. You will not capitalize this. इसके exceptions हैं. However, cost relating to creating software for sale to others are treated in a manner similar to the treatment of research and development cost under IFRS. Cost incurred to develop software for sale to others are expensed and incurred until the product's technical feasibility has been established, after which the cost of development a saleable product are capitalized. Cost incurred for developing software for internal use must be expensed until it is probable that firm will complete the project and use the software as intended. Technological feasibility is more difficult to demonstrate than probability of completing and using the software. Beta, this part I want you all to thoroughly understand. Didn't get the part after cost incurred. देखो बेटा, सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो ना, इट कुड बी फॉर इंटरनल यूज एज वेल, है ना, और इट कुड बी फॉर सेल. आई एम कमिंग टू दैट. सॉफ्टवेयर फॉर, देखो सबसे पहले बताओ, आईएफआरएस वाला पार्ट सबको क्लियर है ना? आईएफआरएस वाला पार्ट सबको क्लियर है? फर्स्ट कंफर्म टू मी दैट आईएफआरएस वाला पार्ट सबको क्लियर है ना? उसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए विद इन आईएफआरएस. Is IFRS part clear to all of you?
Now look at the US GAAP part. Look at the US GAAP part. In the US GAAP, what is happening? In the US GAAP, what is happening? US GAAP में क्या हो रहा है देखो. I'll write it for you. In fact, इसको मैं फिर से लिखता हूँ. The title is internally generated नहीं लिखते, created लिखते हैं. Internally created intangible assets. Through research and development. इसमें IFRS क्या बोलता है? IFRS क्या बोलता है? रिसर्च एक्सपेंस and development may be capitalized. और यूएस गैप क्या बोलता है? यूएस गैप क्या बोलता है? यूएस गैप बोलता है both R&D, both research and development expensed. Now we have exception to that. Exceptions. इसके exceptions में क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. बेटा ये पूरा चार्ट है ना, यहां तक आप लोग को समझ में आया कि नहीं बताओ? यहां तक आप लोग को समझ में आया कि नहीं बताओ? पूरा चार्ट यहां तक समझ में आया कि नहीं बताओ? पूरा चार्ट यहां तक समझ में आया कि नहीं बताओ? If you have understood the chart up to this part, then I can take you ahead easily. But पहले यहां तक समझ में आना है. You should be very clear up to this part. ठीक है, ये क्लियर है. चलो अब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करते हैं. So we are talking about software development. Two purposes: for sale and for use. If it is for sale, क्या बोलता है देखो?
cost incurred to develop the software for sale to others are expensed as incurred until the product's technological feasibility has been established, after which the cost of developing the sellable product are capitalized. ठीक है, तो ये for sale to others वाला है, for sale to others वाला. Let me write that. Cost incurred until the technological feasibility is established. Cost incurred until this part will be expensed, and cost incurred after this point can be capitalized. मुझे बताओ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में फॉर सेल वाला पार्ट समझा क्या? फॉर सेल वाला पार्ट समझा क्या? ये सब नोट्स आपको मेरे साथ साथ लिखने चाहिए. यू शुड राइट अलोंग विथ मी. कमांड डेवलप करना है तो ये सब लिखना पड़ेगा. Now regarding the use, developing software for internal use must be expensed until it is probable that firm will complete the project and use the software as intended. ये देखो, if it is for use तब क्या करना है? फर्म, इस लाइन को पकड़ो, until it is probable that, ऐसा लिखते हैं. It is probable that the firm will complete the intangible asset and use it as planned. ठीक है ना? तो it is probable that, तो ये जो है ना, establishing this probability, इसके दो पार्ट कर लो. प्रायर कॉस्ट्स एंड पोस्ट कॉस्ट्स. तो प्रायर कॉस्ट्स विल बी एक्सपेंस्ड एंड पोस्ट कॉस्ट जो है दैट कैन बी capitalized. This is the summary of the software development part under under US GAAP. ये US GAAP का रिक्वायरमेंट है. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ये US GAAP वाला पार्ट है.
beta, make sure that in your notebook you have written each and everything systematically like this. अब मुझे बताओ बेटा, ये क्लियर हुआ कि अभी भी प्रॉब्लम है? इज दिस क्लियर और इज इट स्टिल क्रिएटिंग ट्रबल इन अंडरस्टैंडिंग? अभी क्लियर हुआ कि अभी भी क्लियर नहीं हुआ? एंड once again take a moment to read this content from here. Take a moment to read this content from here. इसको एक बार यहां से पढ़ लो और मुझे फाइनल कंफर्मेशन दो, इज एवरीथिंग एब्सोल्युटली क्लियर और नॉट? Final confirmation whether everything is absolutely clear or not.
All clear? Chalo, let us move ahead and we talk about purchased intangible assets. अभी internally created intangible asset हो गया. Now we are dealing with purchased intangible asset. Those intangible assets which were or which are acquired. इसको देखो. An intangible asset purchased from another party is initially recorded on the balance sheet at cost. At cost. Initially at cost, which is typically its fair value at acquisition. If the intangible asset is purchased as part of a group, the total purchase price is allocated to each asset on the basis of its fair value. For analytical purposes, an analyst is usually more interested in the type of asset acquired rather than the value assigned on the balance sheet. For example, recently acquired franchise rights may provide insight into firm's future operating performance. In this case, the allocation of cost is not as important. Yani asset type is more important as compared to the value that you are assigning to that. The financial statement effects of capitalizing intangible assets are same as effect of capitalizing other expenditure. Capitalizing results higher income in the first year and lower in the subsequent years. We have learned that already, correct na? Capitalization versus expensing. Similarly, assets, equity and operating cash flow are all higher when expenditures are capitalized. A company that generates its intangible assets internally will have lower balance sheet assets than a company that purchases its intangible asset. Very, very important line. This will be tested in exam. Internally generated intangible assets are typically expensed while purchased intangible assets are capitalized. This can have a considerable impact on financial statements and ratios. Beta, can we all confirm that purchased वाला part तो it was easier than the earlier part? ये तो बहुत easy है, इसमें तो कोई problem ही नहीं है. अरे at least give me response quickly. This should be done and clear already. इसमें तो कोई doubt होगा नहीं. I don't think there will be any doubt over here. Whenever you are acquiring an intangible in a business combination, अभी business combination क्या होता है? Business combination क्या होता है? When a company is taking over another company entirely, पूरा का पूरा business acquire, अभी asset acquire नहीं किया, पूरा का पूरा business acquire किया, then it is acquisition of a business which can be considered as a business combination. Or an entity may acquire control over the other entity by purchasing substantial portion of its equity, majority portion of its equity, जिसको हम holding and subsidiary company का relationship बताते हैं, parent and subsidiary company. यानी कोई parent company बन जाता है तो subsidiary को तो indirectly उसने acquire ही कर लिया है. So this is not acquisition of the business but acquisition of the shares of that company. Both ways, control establish हो गया. If the control is established, it is a business combination. तो business combination में how should you determine the value? That is the focus point. देखो, purchase price minus the fair value of the assets acquired and minus the
fair value of the intangible assets previously not recognized, जो भी बच जाता है, that is basically goodwill. Balancing figure will always be goodwill. Only goodwill created in a business combination is capitalized on the balance sheet. The cost of internally generated goodwill are expensed in the period incurred. Goodwill balance sheet में कभी भी आ सकता है only in one scenario, that is when there is a business combination. इतना समझ लेना, business combination नहीं तो balance sheet में goodwill नहीं आएगा. Goodwill can arise only because of business combination. So this is the summary of how goodwill should be computed when it comes to business combination. I will be taking you through the calculative examples on this. ठीक है, calculative examples on this will clarify. एक बार इस acquisition method को और एक goodwill वाले point को पढ़ लो and let me know if you have any specific points of doubt. Meanwhile, I'll switch to my other device. So here we are talking about impairment of assets. First of all,
impairment of assets, it is dealt with differently under IFRS and US GAAP. IFRS and US GAAP में differences हैं when it comes to impairment of assets. ठीक है. एंड सिग्निफिकेंट डिफरेंस, हमको ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेटा अच्छे से. इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स अंडर आईएफआरएस पहले सीखेंगे, फिर इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स अंडर यूएस गैप सीखेंगे. तो बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पेयरमेंट? कोई एसेट यूज करते करते धीरे धीरे उसका वैल्यू जब कम होता है, वी कॉल इट डिप्रिसिएशन, है ना. कोई एसेट को यूज करते करते जब उसका वैल्यू कम होता है, वी कॉल इट डिप्रिसिएशन. But impairment is not depreciation. Impairment is something different. A sudden decline in the value because of some internal or external factors can be considered as indication of impairment, which is causing the reduction in the value of the asset. तो बेटा मैं यहाँ पर जो notes दे रहा हूँ आपको, these are very very important notes. ये notes squeezer में ठीक से नहीं दिए हुए हैं. I want you to understand this whole thing and take the screenshot of these notes. ठीक है. जो पार्ट क्लियर नहीं होगा, you can ask me to explain, I'll explain to you that. And it is around 10 to 15 pages of notes that you will have to take a screenshot. It is considerable. These notes are not given properly in the squeezer book. That is why I have switched to this device. ठीक है. So first heading, what I want you all to write is impairment of assets under IFRS. Under that heading, meaning of impairment, it is basically weakening in value of assets. An asset is impaired when its carrying amount exceeds its recoverable amount. What is carrying amount? Carrying amount is the amount at which an asset is recognized after deducting any accumulated depreciation or amortization and accumulated impairment losses thereon. What is recoverable amount? It is higher of the following: fair value of asset less cost of disposal and value in use. You have to compare these two. Whichever is higher will be considered as recoverable amount. Higher of these two will be considered as recoverable amount. Beta, without wasting time, you have to give me a clear signal. आपको लिखना नहीं है. You have to take the screenshot and tell me done and clear so that I can move ahead. कोई बात नहीं समझ में आता है, you ask me. टाइम खराब नहीं करेंगे. Give me a clear signal, done and clear, so that I can proceed ahead. All right. What is value in use? It is the present value of the future cash flow expected to be derived from an asset or cash generating unit. What is impairment loss? तो बेटा what is value in use पहले समझ लो. जो asset के use से जो भी cash मिलने वाला है, the present value of that cash will be value in use. अब impairment loss क्या है? If the recoverable amount of an asset is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset should be reduced to its recoverable amount. That reduction is impairment loss. So impairment loss can be computed by taking carrying amount minus recoverable amount. So if the recoverable amount is more than or equal to the carrying amount, no impairment loss is accounted for and asset is not impaired. निखिल गुप्ता, जो तुमने लिखा है लाइन, दैट इज रॉन्ग. एनपीवी कहाँ से आ गया? एनपीवी मतलब तो नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है ना. एनपीवी मींस नेट प्रेजेंट वैल्यू. फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल इज नॉट एनपीवी. दैट इज व्हाई इट इज मेंशन्ड दैट वे. दैट इज व्हाई इट इज मेंशन्ड दैट वे.
बेटा जल्दी स्क्रीनशॉट लो और मुझे बताओ इफ दिस इज क्लियर और नॉट. नेक्स्ट, इंडिकेशंस ऑफ इंपेयरमेंट. हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि इंपेयरमेंट हुआ है? I want you all to read this and give me a confirmation. An entity shall assess at each balance sheet date whether there are any indications of impairment. किसी एसेट पर आपको इंडिकेशन मिलता है, देन यू पुट दैट एसेट अंडर टेस्ट ऑफ इम्पेयरमेंट. किसी एसेट पर कोई इंडिकेशन नहीं मिलता, सो यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. इंडिकेशन मिलेगा, देन यू पुट दैट एसेट अंडर टेस्ट ऑफ इम्पेयरमेंट, एल्स डू नथिंग. तो पुटिंग दैट एसेट अंडर टेस्ट ऑफ इम्पेयरमेंट मतलब चेक कर रहे हो whether it is having any possibility of impairment. That test is what we call as impairment test. एक एसेट इंपेयर हुआ है कि नहीं वो चेक करने को हम कहते हैं इम्पेयरमेंट टेस्ट. तो इम्पेयरमेंट टेस्ट इज टू बी परफॉर्म्ड ओनली व्हेन द एसेट इज गिविंग इंडिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट. When the asset is giving any indication of impairment, else nothing has to be done. If you are done and clear with this, we move ahead. A very very important note. कभी आपने किसी एसेट का इम्पेयरमेंट टेस्ट किया एंड सपोज यू फाइंड दैट द एसेट इज नॉट इम्पेयर्ड, बट उसका जो भी डेप्रिसिएशन है फॉर लेटर पार्ट विल बी एज पर द आउटकम ऑफ टेस्ट ऑफ इम्पेयरमेंट. Will be as per the outcome of test of impairment. This you have to be very very careful about. Recognition and measurement of impairment loss. How would you recognize and measure the impairment loss? यहाँ से calculative part start होता है. ये तो ठीक है, this part is not that important. ये जो है ना, you can just take the screenshot. I will explain this through calculative examples. That will be better. इसको theory से समझने जाओगे, it will not be that impactful. You understand it?
through examples, that will be better. And take the screenshot of this as well. And we start with the IFRS part. Let me get started with impairment questions. Write this heading: impairment of assets, practice questions. But from here it will be all the calculative stuff that will come into picture. I want you to carefully understand this whole matter. Getting started from first question. When you read this question, आपको क्या समझ में आ पाता है? Are you finding yourself in a position to attempt it or not? In case you are giving it a try, quickly try it out. And be ready with your financial calculators. आपको ज़रूरत पड़ेगा ना बेटा, because you'll have to compute present value and everything. Be ready with your financial calculators. I won't give you more than 2 minutes.
And don't forget to take the screenshot of the question का screenshot ले लो, then also take the screenshot of the solution, but first you give your best try. Let us check the calculation. Carrying amount is 20,48,000. To compute value in use, annual cash flow for remaining life of 5 years is 5,20,000 every year. So n will be 5 I by y, n will be 5 I by y 15, PMT 520,000, FV 0 and CPT PV. When you do this calculation, you get the PV of cash flow, which is value in use. Now recoverable amount will be higher of the following. But I would suggest you to take note of this carefully. Something important should not miss out. And take the screenshot of the same. Moving ahead. As per IFRS, which is included in IAS 36, when recoverable amount of the asset is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset shall be reduced to the recoverable amount. That reduction is impairment loss. So carrying amount minus recoverable amount will give you the impairment loss. That amount is 3,04,879. Those who got this answer, they are correct. जिसको नहीं समझा, make sure that you ask me and get that thing clarified. Either ask me doubt or give me a signal that it is done and clear. Either ask me doubt or give me a signal that it is done and clear.
Attempt question number 2. I want each one of you to give your best try. Each one of you to give your best try. You all are giving me answer as 18,800. Let us check. Recoverable amount will be 18,60,000. Recoverable amount will be 18,60,000. Then अच्छा 1,88,000 है ना? Yeah, 1,88,000 will be the answer. Correct. Correct. जिसका ये आंसर आया they are all correct.
Question number 3. Let us check the answer. Carrying amount 720,000. Value in use will be 587,927. Higher of the two, that is fair value and value in use. It is $600,000. Finally, impairment loss will be 120,000. Question 4.
Shall we proceed with the solution? कैरिंग अमाउंट पहले निकालना पड़ेगा ना. Carrying amount is less than recoverable amount, so no impairment loss has arisen. No impairment loss has arisen. बेटा फर्स्ट ऑल ऑफ यू कंफर्म टू मी वन थिंग, ये समझ में आया ना? As per IAS 36, if there are indications of impairment and the depreciation or amortization will be adjusted as per the revised findings in the test. तो annual depreciation for the later year, अब 2 साल ही लाइफ बचा है, तो 7 लाख will have to be spread over 2 years. तो ये भी तो कैलकुलेशन पूछ सकता है ना एग्जाम में. What will be the depreciation for the later years? The depreciation now will be 3,50,000 every year for the next 2 years. Take the screenshot of this. Now, be careful. You have to compute the impairment loss both as per IFRS as well as US GAAP. तो इसमें आपको IFRS वाला निकालना है. US GAAP I will explain to you. Do not do the US GAAP part on your own. I will explain to you. Just deal with the IFRS part.
Let us check the answer as per IFRS. Impairment of assets under IFRS. देखो, carrying amount, then value in use. Higher of the two, that is recoverable amount and value in use. Recoverable amount is higher. So, impairment loss will be 10,000. And I can see you all have given the same answer. Impairment loss will be 10,000. अभी सुनो, in case of US GAAP, application is little different. इसको एक बार सीख लो अच्छे से, इसको एक बार अच्छे से सीख लो. In case of US GAAP, application different हो जाएगा. So impairment of assets under US GAAP. Recoverable amount as per US GAAP is the sum of undiscounted cash flow including the scrap value. So every year you are going to get $58,000 for 8 years. Scrap value जो आपको मिलेगा 16,000. All taken together is 480,000. This 480,000 is the recoverable amount as per US GAAP. In case of IFRS, recoverable amount is the higher of value in use and sale price minus the realizable cost, that is the cost to sell the asset. However, under US GAAP, all the undiscounted cash flow when aggregated, that will give you the realizable value, or the right term is recoverable amount. So as per US GAAP, the carrying amount exceeds recoverable amount, the asset is impaired, but impairment loss will not be carrying amount minus recoverable amount, it will be carrying amount minus fair value, और fair value उसका कितना है 510,000. So impairment loss as per US GAAP will also be 10,000. आपको समझ में आया? दो स्टेज में काम करना है. अनडिस्काउंटेड कैश फ्लो का एग्रीगेट ले लो, वो आपके कैरिंग अमाउंट से कम हो रहा है, देन द एसेट इज इम्पेयर्ड. बट इम्पेयरमेंट लॉस करने के लिए, इम्पेयरमेंट लॉस कंप्यूट करने के लिए, यू विल नॉट टेक कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट, यू विल टेक कैरिंग अमाउंट minus the fair value. I would want you all to take the screenshot of this. Take the screenshot of this. IFRS वाला 10,000, US GAAP भी 10,000 आएगा. Next, again this question is asking you to compute both under IFRS and US GAAP.
Okay, let us check your answers. You are all saying no impairment under both cases. Recoverable amount is greater than carrying amount. No impairment. Sum of undiscounted cash flows. Yes, you are right. Under both IFRS and US GAAP, impairment loss will not arise. You were correct with that. Yes, I am providing many more questions for you to practice. You just have to keep doing the practice. Here's the next one. Again, you have to do it as per IFRS as well as US GAAP. Let us check your answers. Under IFRS, ये चेक करो. Under IFRS, it will be 10,000. Under US GAAP, there won't be any impairment. Under US GAAP, there won't be any impairment. One moment.
एक मिनट. Now this question you leave it. We have already done this in a different format. इसको जाने दो. This was the last one, what you have solved. Now, impairment is as such over. You just have to revise and practice it well. Impairment में there is nothing more. This is the concept. You can take a short 10-minute break and then we shall continue. Take a short 10-minute break and then we shall continue.
All right. Let us look at this chapter again. So here we are back to chapter number 7, analysis of long term assets. We have understood what exactly is intangible asset, that is intangible long lived asset. So we have three categories over here: intangible assets created internally, purchased intangible assets, and intangible assets obtained in a business combination. Then impairment and derecognition. We have talked about impairment under IFRS. We have talked about impairment under US GAAP. And this one example given in your Squeezer book, I would want you to deal with this right now. I want you to deal with this right now. Deal with this example right now. Conclude quickly whether you are clear with that or not.
गिव मी अ क्लियर इंडिकेशन, ये आपसे हुआ क्या? The answer given over here, $15,000 loss as per US GAAP, 10,000 loss. मुझे बताओ, you all got these answers? You all got exactly these answers? Now, intangible assets with definite lives, indefinite lives and definite lives दोनों. तो देखो, let us understand this through an example. Example, cost of intangible asset, say $80,000, life 5 years. तो इसका आउटकम क्या होगा? यू राइट अलॉन्ग विथ मी, ओके, यू राइट अलॉन्ग विथ मी. इसका आउटकम क्या होगा? एनुअल amortization will be 80,000 divided by 5, that is equal to $16,000. Annual amortization will be $16,000. Another example. Example, cost of IA, that is intangible asset, $80,000, life indefinite life, indefinite life. इसका आउटकम क्या होगा? नो एनुअल amortization. No annual amortization. The intangible asset will be tested for impairment every year compulsorily. इसका मतलब इंडिकेशन मिले या ना मिले, इसका आपको इम्पेयरमेंट टेस्ट करना पड़ेगा. ये दो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने क्या बताया कि जिस इंटेंजिबल एसेट का डेफिनेट लाइफ है, द कॉस्ट ऑफ दैट इंटेंजिबल एसेट विल बी सिस्टमैटिकली स्प्रेड over the life. Yes, this requirement is same for both IFRS and US GAAP. This requirement is common. यहां पर डिफरेंस नहीं है. At this point, IFRS and US GAAP, they are aligned. Okay, now a testing point.
अ टेस्टिंग पॉइंट, देखते हैं आप लोग का दिमाग काम करता है कि नहीं। गुडविल अराइजिंग ऑन business combination, goodwill arising on business combination, $80,000, estimated life 5 years। अब बताओ क्या करोगे। गुडविल अराइजिंग ऑन बिजनेस कॉम्बिनेशन $80,000, एस्टिमेटेड लाइफ 5 years, बताओ क्या करोगे, आउटकम क्या होगा। आई वॉन्ट रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स, बताओ आउटकम क्या होगा। व्हाट विल बी द आउटकम, आउटकम क्या होगा बताओ। कम ऑन, गिव मी योर रिस्पॉन्स क्विकली, क्या कर रहे हो। गुडविल का आप बोल रहे हो इंडेफिनिट लाइफ, मैं बोल रहा हूं गुडविल का एस्टिमेटेड लाइफ है 5 years, अब बोलो। अरे मैं बोल रहा हूं ना यहां पर जनरली वी अज्यूम दैट गुडविल हैज इंडेफिनिट लाइफ, मैं तो बोल रहा हूं यहां पर गुडविल का लाइफ 5 years, तो क्या करोगे। अरे स्टैंडर्ड आपको क्लियर बोलता है भाई कि इवन इन दिस केस आउटकम क्या होगा, आउटकम विल बी सेम, नो एनुअल अमोर्टाइजेशन, just like asset with indefinite life and goodwill both will undergo same treatment। अनीस शेख 16,000 नहीं आएगा यहां पर, ये जो 5 years दिया हुआ है इट कुड बी गिवन फॉर कंफ्यूजन, बट आपको मालूम होना चाहिए कि गुडविल ऑल्सो फॉल्स इन दैट सेम कैटेगरी। confirm to me one thing, is this point clear to all of you। Yes, there will be impairment, there will be impairment, 100% there will be impairment, same मैंने बताया ना, same treatment, same treatment, so it will be tested for impairment every year compulsorily। Goodwill arising on business combination will be tested for annual impairment compulsorily। क्लियर है बात। कम बैक टू दिस, assets with indefinite life, long lived assets held for sale। अब इसको समझ लो, लॉन्ग लिव्ड एसेट्स हेल्ड फॉर सेल मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स है, ठीक है, और उसको आप यूज करने के नहीं रखे हो, यू हैव डिसाइडेड टू सेल इट, मतलब आपने मे बी यू हैव परचेस्ड अ कार, यूज्ड इट फॉर 5 years, अब आपने डिसाइड कर लिया यू डोंट वांट टू यूज दैट कार, यू हैव डेजिग्नेटेड फॉर सेल, बिका नहीं है कार, कार इज स्टिल विथ यू बट यू हैव डेजिग्नेटेड फॉर सेल, then it comes in this category long lived asset held for sale।
It comes in this category, long lived asset held for sale. If a firm intends to sell an asset, it is probable that the asset will be sold and the asset is available for immediate sale, then it must be reclassified from held for use to held for sale. When a firm reclassifies an asset as held for sale, the asset is no longer depreciated. Very very important point, इस बात पर ध्यान रखना. The asset is no longer depreciated. आप जैसे ही उसको डेजिग्नेट करते हो सेल के लिए, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना बंद कर दिया जाएगा. और अमोर्टाइज्ड टेंजिबल एसेट के केस में नो डेप्रिसिएशन विल अराइज. इंटेंजिबल एसेट के केस में नो अमोर्टाइजेशन विल अराइज. अब देखो आगे क्या बोल रहा है. द हेल्ड फॉर सेल एसेट इज इम्पेयर्ड if carrying value exceeds the fair value less selling cost. If impaired, the asset is written down to the net realizable value and the loss is recognized in the income statement. अभी आपको depreciation charge नहीं करना है, but it is kept for sale. अब वो जो concept है value in use यानी future cash flow irrelevant हो गया. Now it is the carrying amount and net realizable value. If the carrying amount exceeds the net realizable value, you have to bring down the carrying amount to net realizable value. इस लाइन पर ध्यान देना. For long lived asset held for sale, the loss can be reversed under IFRS and US GAAP. देखो long lived asset held for sale, उसमें impairment loss का reversal दोनों ही permit करते हैं. मतलब IFRS as well as US GAAP, they both permit the reversal of impairment loss if the value of the asset recovers in future. However, the loss reversal is limited to the original impairment loss. ये जो loss का reversal करोगे, simple point, in the past if you have charged a loss of $5,000, reversal cannot exceed the amount of loss ना. जितना loss किया है मैं बोलता हूँ पूरा का पूरा reverse कर दो, उससे ज़्यादा reversal कैसे होगा? Loss से ज़्यादा उसका reversal नहीं हो सकता. The carrying value of asset after reversal cannot exceed the carrying value before the impairment was recognized. सीधी बात है. I want you all to read this content about long lived asset held for sale. कोई point clear नहीं है तो मुझसे पूछ लो. And if everything is clear, we will move ahead. If everything is clear, we will move ahead. If everything is clear, we will move ahead. Do not waste time. Quickly give me your response. एकदम क्लियर है. अब देखो नेक्स्ट सेगमेंट इज डी रिकॉग्निशन. रिकॉग्निशन मतलब अकाउंटिंग बुक्स में किसी एसेट को लाना. डी रिकॉग्निशन मतलब अकाउंटिंग बुक से बाहर निकालना. तो कोई एसेट को अकाउंटिंग बुक से बाहर कब निकालोगे? ऑब्वियसली they are removed from the balance sheet when the assets are sold, exchanged or abandoned. आप एसेट को सेल कर दो,
पुराने एसेट के एक्सचेंज में कोई नया एसेट ला रहे हो तो भी तो पुराना एसेट आपके बैलेंस शीट से बाहर निकल जाएगा। और इफ यू अबैंडन दी एसेट, अबैंडन दी एसेट मतलब जैसे कभी कभी होता है ना, एसेट आपने पूरा इतना यूज कर लिया है, अब उसका यूज आप खत्म कर दियो, बट इफ यू ट्राई टू सेल इट, वो बिकेगा भी नहीं, नो बडी विल बाय दैट एसेट, तो आप क्या करोगे उस एसेट का? यू हैव टू अबैंडन दैट। उसका कुछ वैल्यू बच गया है, सपोज कुछ कैरिंग वैल्यू बच गया है, तो उसको राइट ऑफ करके खत्म करना पड़ेगा। तो व्हेन यू डू दैट, डिस्पोजल प्रोसीड्स, कैरिंग वैल्यू बिफोर डिस्पोजल, जो भी डिफरेंस आएगा देयर विल बी गेन और लॉस। So this will be cash flow from investing. It will be removed from the balance sheet, and any gain or loss will be recorded in income statement. Any gain or loss arising on sale. ठीक है? है ना? Any gain or loss arises, you charge it off to income statement, or if it is a gain, recognize that gain in income statement under a separate line item, gain or loss on disposal of asset. Under a separate line item, gain or loss on disposal of asset. Examples कर लेते हैं। इस एग्जाम्पल को देखो, एसेट डिस्पोज किया आपने, जिसका कैरिंग अमाउंट कितना है, जिसका कैरिंग अमाउंट कितना है, एसेट डिस्पोज किया है जिसका कैरिंग अमाउंट कितना है, $10,000। यू आर सेलिंग दैट एसेट और डिस्पोजिंग दैट एसेट, और डिस्पोजल प्रोसीड्स मिल रहा है आपको, केस 1 12,000, तो जितने का एसेट था उससे ज्यादा प्रोसीड्स मिला है, तो देयर विल बी अ गेन। $2,000 गेन होगा। इन द सेकेंड केस 10,000 का एसेट यू आर डिस्पोजिंग फॉर 6,000, $4,000 लॉस हो गया। थर्ड केस 10,000 वर्थ ऑफ एसेट यू आर डिस्पोजिंग फॉर नो रियलाइजेबल वैल्यू, पूरा 10,000 लॉस हो जाएगा। दैट्स इट। छोटी छोटी बात है, बट यहां पर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और सारा गेन लॉस कहां जाएगा? ऑल दिस गेन लॉस, ऑल दिस गेन लॉस विल बी recognized in income statement. It will be recognized in income statement. एकदम इजी काम है। अभी in derecognition there is also a matter of spin off,
स्पिन ऑफ मतलब चेंज ऑफ ओनरशिप, स्पिन ऑफ मतलब चेंज ऑफ ओनरशिप। पहले क्या था, कंपनी ए इट वॉज द शेयर होल्डर ऑफ कंपनी बी, मतलब कंपनी बी को एक्वायर किया था या उसके शेयर्स को एक्वायर किया था कंपनी ए ने, यानी कंपनी बी जो है दैट इज सब्सिडियरी, दैट इज सब्सिडियरी कंपनी, कंपनी ए जो है वो पेरेंट कंपनी है ना। और जो शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी ए है, यानी शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी ए आर कंट्रोलिंग कंपनी ए एंड कंपनी ए इज कंट्रोलिंग कंपनी बी। स्पिन ऑफ होने के बाद दो कंपनी अलग अलग कर दी जाएगी, मतलब जो कंपनी बी के शेयर्स कंपनी ए के पास पड़े, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी ए, मतलब कंपनी ए के शेयर होल्डर्स। मतलब हुआ क्या, लॉजिकली सपोज आई वॉज द शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी, तो आई एम द शेयर होल्डर ऑफ कंपनी ए और कंपनी ए कंट्रोल्स कंपनी बी, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, कंपनी बी के जो शेयर्स है वो कंपनी ए के पास पड़े थे और कंपनी ए मेरी कंपनी है, तो अभी क्या हो गया, कंपनी बी के शेयर्स मुझे दे दिए गए, दैट मीन्स नाउ आई शो ओन। Guys, I got disconnected for a while. I believe बीच में वो थोड़ा सा डिस्कनेक्शन हो गया था। तो मैं क्या बोल रहा था वो सुन लो। या earlier the subsidiary company's shares were held by parent company A बिफोर स्पिन ऑफ, है ना, बिफोर स्पिन ऑफ। अभी पेरेंट कंपनी के बैलेंस शीट में शेयर्स पड़े, पेरेंट कंपनी ने बोला भाई हमको बी के शेयर्स नहीं रखने, अपने शेयर होल्डर को इसने ट्रांसफर कर दिए शेयर्स, यानी जो शेयर होल्डर ऑफ कंपनी ए है नाउ दे विल बी होल्डिंग शेयर्स ऑफ कंपनी ए, वो तो पहले भी था बट नाउ दे विल ऑल्सो होल्ड शेयर्स ऑफ कंपनी बी, दे विल ऑल्सो होल्ड शेयर्स ऑफ कंपनी बी। तो स्पिन ऑफ से पहले एंड स्पिन ऑफ के बाद, अब कॉमन सेंस लगाओ, कंपनी ए के बैलेंस शीट में ना, कंपनी ए के बैलेंस शीट में ये इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरी, अब वो भी तो डिस्पोज हो गया ना, लॉजिकली इट वेंट आउट ऑफ द बैलेंस शीट एंड वाज गिवन टू द शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी ए, डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहां पर क्या करना है, देखो इस लाइन को पढ़ो, बिफोर द स्पिन ऑफ कंपनी ए द स्पिनर ओन्स कंपनी बी द स्पिनी एंड शेयर होल्डर्स just have shares in company A. After the spin-off, shareholders have shares in both company A and company B. Company B is no longer included in consolidated accounts of company A. Once the spin-off becomes probable, the balance sheet assets and liabilities of the spinee will be transferred from assets held for use to assets held for sale. अब तक आप उसके कंसोलिडेशन में क्या कर रहे थे, you were keeping it as assets held for use. अब बिकॉज वो स्पिन ऑफ करना है डिसाइड हो गया, तो इट विल बी क्लासिफाइड एज एसेट्स हेल्ड फॉर सेल इन द स्पिनर्स अकाउंट्स। स्पिनर्स अकाउंट हमारे केस में स्पिनर कौन है, स्पिनर इज कंपनी ए, स्पिनी जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है दैट इज स्पिनी, जो ट्रांसफर कर रहा है वो स्पिनर। तो स्पिनर हमारे एग्जाम्पल में कंपनी ए है एंड स्पिनी हमारे एग्जाम्पल में कंपनी बी है। Assets held for sale may be referred to as asset held for distribution in this context. No profit or loss is recorded in the disposal income statement. अब obviously you are giving it to the shareholders, तो यहाँ पर कोई gain loss record नहीं करना है। ये spin off वाला part भी it is considerable part of this heading D recognition। एक बार D recognition हो गया, then इसमें एक छोटा सा part और बचा है disclosures।
तो डिस्क्लोज क्या क्या करना है ये मैं नहीं सिखाऊंगा, ये तो आपको पढ़ने का है। आईएफआरएस कौन कौन सा डिस्क्लोजर मांग रहा है, बेसिस ऑफ मेजरमेंट, डेप्रिसिएशन मेथड, आपको बताना पड़ेगा कि विच डेप्रिसिएशन मेथड यू आर फॉलोइंग, मतलब वेदर इट इज अ स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड और सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, कौन सा डेप्रिसिएशन मेथड आप फॉलो कर रहे हैं, यू हैव टू डिस्क्लोज। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इन द पीरियड, इस साल का कितना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हुआ है, दैट यू हैव टू रिपोर्ट। यूजफुल लाइफ ऑफ और डेप्रिसिएशन रेट, all these things you will have to disclose. Gross carrying amount, accumulated depreciation at start of the period, reconciliation of carrying amount from the beginning till end, opening balance of carrying amount, उसमें कोई addition हुआ है तो minus the depreciation minus the impairment, closing balance, ये पूरा reconciliation भी आपको disclose करना है। All these disclosures will be provided in notes to accounts. The firm must also disclose the following: title restrictions, अब ये सब आपको पढ़ने का बेटा, क्या क्या डिस्क्लोज, बट ये मालूम होना चाहिए कि विच आर द डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड। अरे आर यू पीपल लिसनिंग टू मी, आर यू पीपल लिसनिंग टू मी कि मैं बोलते जा रहा हूं, इज इट दैट जस्ट आई एम स्पीकिंग? क्लास अभी पूरा नहीं हुआ है। What I am saying is this is a list of disclosure. इसमें होता क्या है, which of the following is not a disclosure required under IFRS, ऐसा करके क्वेश्चन आता है, या which of the following is not a disclosure under US GAAP। तो आपको 2-3 आइटम दे देगा, 3 आइटम दे देगा, उसमें से जो डिस्क्लोजर नहीं है वो आइडेंटिफाई करना है, समझा? दैट इज वाई आपको मालूम होना चाहिए कि डिस्क्लोजर में क्या क्या आएगा और क्या क्या नहीं आएगा। लाइकवाइज यू हैव यूएस गैप डिस्क्लोजर्स, यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। नाउ लास्ट पार्ट, ये जो है ना, ये दिस इज ट्रबल फेस्ड बाय मेनी स्टूडेंट्स, ये बहुत लोगों को परेशान करता है। आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन, आर यू क्लियर विद दीज 3 रेशियोज? ये रेशियो हम रेशियो के साथ नहीं सीखेंगे, ये रेशियो अब भी सीखना पड़ेगा। ये रेशियो कॉमन सेंस जो अप्लाई करेगा उसको यहाँ प्रॉब्लम नहीं आएगा, जिसका दिमाग काम नहीं करता उसको ये ट्रबल देगा। मुझे बताओ कितने लोगों का दिमाग काम करता है और ये उनको ऑलरेडी मालूम है? नहीं मालूम तो विदाउट हेजिटेशन बोल देना, सो दैट मैं समझा देता हूं। एकदम एक्सट्रीम सिंपल रेशियोज, आई विल एक्सप्लेन दिस थ्रू एग्जाम्पल। वो देखो, तन्वी सोनी सेज नेवर टच्ड इट। ये बेटा नेवर टच्ड इट, अभी एग्जाम आ जाएगा ना तन्वी, कभी एग्जाम अगस्त में कि नवंबर में? ये रिवीजन बैच में आई ऑफनली फाइंड पीपल कम एंड टेल मी सर कभी पढ़ाई नहीं, मतलब रेगुलर क्लास कर लिया पर पढ़ाई नहीं। चलो तन्वी ने ऑनेस्टली बोल तो दिया, अदर्स दे आर साइलेंट। बेटा टाइम खराब नहीं करो, क्योंकि इवन आई एम टायर्ड, यू आर टायर्ड। लास्ट पार्ट है चैप्टर का, एक बार ये कंप्लीट हो गया तो वी विल पुट एन एंड टू द चैप्टर। टुडे वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7। दिस इज द प्रॉब्लम वर्षा, तुम लोग पढ़ाई कैसे करते हो कि तुमको देखना पड़ता है नोट्स तब याद आएगा। देखो आई विल डू वन थिंग, मैं आपको एक एग्जाम्पल करवाता हूं, ठीक है? बेटा इसको प्रैक्टिकली समझने का है, मैं बोला ना दिमाग का खेल है। जो इसको दिमाग से समझ जाएगा कॉमन सेंस लगाकर, उसको बुक से पढ़ने का जरूरत ही नहीं, इट इज दैट इजी।
चलो मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, आई विल एक्सप्लेन इट थ्रू एग्जाम्पल्स। ठीक है, अभी बताओ कॉस्ट ऑफ एसेट। ठीक है, इट इज सपोज कॉस्ट ऑफ एसेट इज 80,000, लाइफ, इसका लाइफ है 10 इयर्स, तो एनुअल डिप्रिसिएशन कितना होगा? एकदम सिंपल है, विदाउट कैलकुलेटर बता दोगे आप, 8,000 पर एनम, है ना, 8,000 पर एनम। उसके बाद आई गिव यू वन इंफॉर्मेशन, 3 years over 7 years रिमेन। 10 साल का लाइफ है ना, उसमें से 3 years ओवर 7 years रिमेन, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? accumulated depreciation will be, देखो एनुअल डिप्रिसिएशन 8,000 है, 3 years हो गए, तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी accumulated depreciation? accumulated depreciation will be 24,000। ठीक है, और एसेट का कैरिंग वैल्यू, एसेट कॉस्ट कितना है? 80,000 लेस accumulated depreciation 24,000, तो माइनस करके इसका कैरिंग अमाउंट कितना आया? इसका कैरिंग अमाउंट आया 56,000। बेटा पहले प्लीज, ये ना मतलब बहुत लोगों ने इसको टच नहीं किया है, इसलिए मैं सिखा दे रहा हूँ। मैं जनरली रिवीजन क्लास में मैं ये स्किप कर देता हूँ कि बच्चे लोग को आता होता ही है। थोड़ा इन्वॉल्व हो जाओ प्लीज। आई नो यू आर टायर्ड बट दिस कैन नॉट बी स्किप्ड ना, इसको स्किप नहीं कर सकते, थोड़ा इन्वॉल्व हो जाओ। मुझे बताओ ये पूरा एग्जाम्पल दिमाग में बैठा? एसेट कितने में लिया? एसेट कितने में लिया बताओ? एसेट कितने में लिया बताओ? यू हैव परचेज द एसेट फॉर $80,000 and its life is 10 years. Annual depreciation $8,000, 3 years over, so accumulated depreciation कितना हो गया? 24,000। तो एसेट का जो बुक वैल्यू आएगा that will be 56,000। अब तक तो ये डेटा याद हो जाना चाहिए, अब तक तो ये डेटा याद हो जाना चाहिए। अब देखो वो 3 रेशियोज का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। देखो एवरेज एज is accumulated depreciation divided by annual depreciation expense। अब बताओ how much was accumulated depreciation in our example? जो पूछ रहा हूं फटाफट बताओ, how much was accumulated depreciation in our example? $24,000। अब देखो I am applying that ratio, 24,000 डिवाइड बाय annual depreciation expense कितना है? एनुअल डिप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है? 8,000। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? 3 years। इसका मतलब ये कि किसी से आपने पूछा, सुनना ध्यान से सुनना, किसी से आपने पूछा कि भैया ये कार कब खरीदा, तो बोले मैं नहीं बताता। ठीक है, मत बताओ। उसकी बैलेंस शीट में जाकर उस कार का अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन देख लूं, आपको कार का अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन दिख गया 24,000, है ना, कार का अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन दिख गया 24,000 एंड आप उसका करेंट ईयर का डिप्रिसिएशन देख लिए, एनुअल डिप्रिसिएशन उसका कितना है? 8,000। आपको आइडिया लग गया कि दिस कार मस्ट हैव बीन इन यूज फॉर 3 years। दैट इज द रेलेवेंस ऑफ दिस रेशियो।
अरे जिसको अक्ल लगाकर समझना है ना, उसके लिए दिस बिकम्स अ गेम प्ले। जिसको अक्ल नहीं लगाना, वो इडियट लोग इसको याद करते रहते फॉर्मूला की तरह। अरे पहला वाला रेशियो समझा कि नहीं? सेकेंड रेशियो, हिस्टोरिकल कॉस्ट कितना था एसेट का? 80,000 डिवाइड बाय एनुअल डिप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना? 8,000। इससे आपको एसेट का पूरा लाइफ मिल जाएगा, 10 इयर्स। खत्म। क्योंकि आपके रिकॉर्ड्स में ये तो दिख जाएगा ना कि ओरिजिनल कॉस्ट क्या था और एनुअल डिप्रिसिएशन कितना है, उससे आपको लाइफ ऑफ द एसेट मालूम पड़ जाएगा। लास्ट देखो, ये 3 इयर्स क्या था? एवरेज एज 3 इयर्स क्या था? एवरेज एज वॉज 3 इयर्स। टोटल यूजफुल लाइफ इज 10 इयर्स। अब हमको फाइंड करना है रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। वेरी इजी। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कैसा आएगा? एंडिंग नेट पीपीई हमारे एग्जांपल में कितना आया था? देखो एंडिंग नेट पीपीई कितना है? 56,000। ये ले लिया 56,000 डिवाइड बाय एनुअल डिप्रिसिएशन एक्सपेंस 8,000। इससे मिल गया क्या? 7 इयर्स। मिल गया आपको रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट मस्ट बी 7 इयर्स। हो गया खत्म। अरे इजी है कि नहीं रे? एकदम इजी है, बच्चे लोग के जैसा। तो कोई इसको ऐसा कैसे बोल सकता है कि सर पढ़ा था पर भूल गए? क्योंकि आप लोग उसको उसके कोर से सीख नहीं रहे हो, उसको रियलिज्म से सीखो, कभी नहीं भुलाएगा। यही चीज मैं रेशियो में करने वाला हूं। 50 रेशियोज, 50 रेशियोज, you'll be learning logically like this. 50 ratios you'll be learning logically like this. That is the end of the chapter. ये इन लोगों ने भी एक एग्जाम्पल दिया है, देख लेना। ये एग्जाम्पल दिया इन लोगों ने, वो देख लेना एज पार्ट ऑफ होमवर्क। हो गया चैप्टर कंप्लीट। चैप्टर इज कंप्लीट। प्रोग्रेस देखो, वी वर डन विथ चैप्टर 2 and 6। नाउ वी आर डन विथ चैप्टर 7 ऑल्सो। कल के टारगेट में वी विल टेक अप चैप्टर 8। बहुत जल्दी हो जाएगा। चैप्टर 8 साइज में छोटा है, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, मतलब इट इज़ अ चैलेंजिंग चैप्टर। चैप्टर 8 चैप्टर 9 दोनों थोड़ा चैलेंजिंग चैप्टर्स है ना। चैप्टर 3 बहुत जल्दी हो जाएगा। तो हमारा कल का टारगेट है मेनली चैप्टर 8 and 9। हमारा कल के टारगेट में 8 and 9 कंप्लीट हो गया, खाली 3 बचा। तो 3 तो यू कैन फिनिश इन मैक्सिमम 2.5 hours टाइम। बट बेटा मुझे बताओ, अभी तक मैंने आउट ऑफ 12 आई हैव कंप्लीटेड जस्ट 3 चैप्टर्स। बट ये 3 चैप्टर आपको रिवाइज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। टुडे व्हेन आई वाज डिस्कसिंग एमसीक्यूज, ठीक है, एप्लीकेशन मुझे अभी भी वीक लग रहा है, मतलब रिवीजन प्रैक्टिस बढ़ाना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। We have completed 40 MCQs today. We have completed 40 MCQs. MCQs. We have completed 40 MCQs today. 40 done. Tomorrow I will do another 40 MCQs. वो MCQs ये दोनों चैप्टर से रहेंगे, चैप्टर 6 and चैप्टर 7, इन्वेंट्री एंड लॉन्ग लिव्ड एसेट। From this I will be covering MCQs.
एमसीक्यू करने का जो बेस्ट टाइम है ना वो लंच ब्रेक के बाद वाला, क्योंकि लंच ब्रेक के बाद वैसे भी आप लोग का अटेंशन थोड़ा कम रहता है. सो इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग अ न्यू टॉपिक आई विल कवर अप एमसीक्यूज. मॉर्निंग में विल कवर अप चैप्टर 8 and 9 and in the afternoon we'll do MCQs of chapter 6 7. टाइम बचा तो चैप्टर 3 we will touch tomorrow, टाइम नहीं बचा तो we'll do it later. मैंने जो टारगेट लिखा था कि मिनिमम 3 days you will need for this much, 3 days से ज़्यादा ही लगेगा, बट मुझे लगता है कि 3 days से थोड़ा ज़्यादा लगेगा. टुमारोज क्लास मैं पहले से बोल रहा हूँ, स्टैमिना लंबा बना के रखना, कल का क्लास एक्सटेंड हो सकता है बिकॉज कल का टारगेट बड़ा है, कल का टारगेट बड़ा है. ठीक है, टुडे आई विल बी पुटिंग एन एंड टू द क्लास एट दिस स्टेज. ठीक है.